Palais Mermoni. Welcome to Palais Mermoni. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. What the heck? Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermoni. Guards at all times. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Tejas? I hope the weather's nice like this tomorrow as well. ओ तेजस, तेरी आवाज नहीं आ रही. I have to keep Welcome to Palais Mermoni. Welcome to Palais Mermoni. deployment of guards at all times.
अबे तेजस हेलो। अबे तेरी आवाज़ नहीं आ रही कब से। तेरी साउंड नहीं आ रही कब से। बहरे। वापस से आजा। हेलो। कुत्ते मेरे को लगा तू चला गया कब से साला। अब आई? हाँ अब आ रही।
Jet! Wipe out!
Shit! Go! इतना सिंपल कब से इधर से अब कहाँ जाना अच्छा नीचे What the fuck ये क्या था भाई तेरी आवाज फिर से नहीं आ रही बोल ही नहीं रहा हूँ तो आएगी कहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं हाँ
हो जा भाई, तैयार हो जाता हूँ। तैयार हो जाता क्या? हेलो गाइस, आई एम अंडर द वाटर। सही में आया अंडर द वाटर। सही में हाँ सच्ची। मैं वो मिशन कर रहा हूँ अंडर द वाटर वाला। हाँ हम भी। अबे वो ऊपर से कुआ, तुम पानी के वो ऊपर भी बने हुए हैं, हाँ उसमें भी छपा अंदर वो ट्रेजर ढूंढ रहा ना तू। डब्बे। ट्रेजर नहीं गए, वो डब्बा, डब्बे के अंदर भी। अबे हटता क्यों नहीं? अरे वो अच्छा ये वाला लेना पड़ेगा। ये भाई अब मारते पूरा। अभी भी नहीं हटा यार। अच्छा दो है, दोनों को एक साथ मारना है। एक सेकेंड और थोड़ा ऊपर। अब समझ गया। साला ये छी, साला ये करने के लिए कब से हम ये कर रहे थे। छे 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 छे, कब कहाँ जाना है? ऊपर चलो ऊपर। I must leave no stone unturned. राइट एंड यो यो भाई यो। भाई असली मैं तो तब आएंगे जब राइजन को हराएंगे। राइडन को क्यों हराएंगे? वो तो कैरेक्टर है ना, वो विलन थोड़ी है। तो उसका भी मिशन होता है ब्रो। अच्छा तूने लगता है देखा ही नहीं है। क्या मतलब राइडन से लड़ाई होती है? हाँ, अभी मेरी एक और कैरेक्टर से लड़ाई हुई थी, वो भी जबकि कैरेक्टर है, मतलब उसका भी एक अलग मिशन है। तो लियोन में जाना, वहां पे देखो लियोन सिटी में, ठीक है, वहां पे जाना, ऊपर देखना, ऊपर एक वो बना होगा, एक और टेलीपोर्टर वाली जगह। हाँ, कौन सी सिटी बोला? कौन सी सिटी? लियोन सिटी किधर है? कोर्ट ऑफ फाउंटेन। सही बोला ना अपन ने? हाँ कोर्ट ऑफ फाउंटेन। भाई पानी के अंदर के भी अंदर, भाई इतना अंदर पहुंच गया कि मैं बाहर निकलने का मुझे रास्ता नहीं मालूम। ये ट्रेजर ढूंढवाने लाया है। अरे तुम कहाँ से आ गए? क्या करता है साला? Go! ये देखो कैसे छुपा इधर, सब मार खा रहे।
फिर वही करना है। इसको तोड़ना है। कूद गया। अच्छा अब इधर ये है। Is this an answer from this world? What? अबे ऊपर कैसे है? Steady as stone. I'll keep this close. नहीं। गलती से चैलेंज स्टार्ट हुआ और मैंने पूरा भी कर दिया। और से लड़ना Is this an answer from this world? उठेगा नहीं ना भाई। उठ गया भाई। Time to clean up. Punishment.
I must leave no stone unturned. Yeah. No escape! अंदर तो और बड़ा हाथी बैठा है। साला एक वाकई मैं जो मिशन कर रहा हूँ ना सीनू, इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है भाई, होगा ही नहीं। काया को कर दिया 25 लेवल। क्या मतलब इतना डेंजरस है? भाई पिंक वाला मेरे पे एक मिल गया और इधर 3 मिल जाएगा। सीनू मैं अगर तेरे वर्ल्ड में आऊंगा तो भाई वो दांत देना देगा, दांत, हाथी के दांत। कितने चाहिए? वो तो डोमेन में मिल जाएगा। चल ना, दिला देगा अब भी छीन दे। डोमेन तो मिल ही जाएगा। दांत वाला डोमेन कौन सा वाला चाहिए? ब्लैक वाला या फिर सिंपल एक रहता है? वो तो दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों ही मिल जाते हैं। हाँ, नेविगेट करना पड़ेगा कौन सा वाला पे है, भूल गया मैं। ये क्या स्पेशल इवेंट? ब्राउज खुल जाएगा रैंडम। क्राफ्टिंग वाले में काम आएगा ना ये सब। मेरा तो है ही नहीं क्राफ्टिंग वाला, कैसे खुलता है? मेरे में है ही नहीं। जी कुछ अच्छा देते। बस यही सब नीचे, इसलिए 10 स्पिन मारेंगे सीधा 10 75 का एक है। इसका वेपन 30 लेवल पर होगा।
का है 239 बेस अटैक। अटैक चार्ज। Oh, I'm looking forward. चुप तेरी ऐसे तैसे। अभी मिला था, खा के खत्म कर दिया। अच्छा तू वो वाला मिशन कर रहा क्या? 800 एक्सपी। उससे भी भयंकर। ये तो मतलब बोल रहा ना, तेरे लिए बहुत कठिन होगा। मुझे बहुत टाइम लगता है कसम से, इसमें सुबह से लगा पड़ा हूँ। एक्सपी कितनी मिलेगी? मेरा मिशन तो कुछ वो ट्रेजर ढूंढना है। 100 मिलियंस ऑफ मोरा। अरे भाई, ट्रेजर ट्रेजर हियर वी कम। ट्रेजर ढूंढते ढूंढते हम ही ना ढूंढ जाए, बहुत खो जाए। कैसे कैसे ये ना उठे बस। ये उठेगा, ये कंफर्म उठेगा। ये नहीं उठेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उठेगा, ये आराम है। नहीं उठा, नहीं उठा भाई। ये तो नहीं टूटेगा। इसी से क्लास टूटेगा आई थिंक। हाय भाई साहब,
फंसा के चला गया। Leave it all to me. Bet you can't keep up with me! Must keep training. Bombs away! Go! I must leave no stone unturned. Oh, so sorry. Dodge this. As a good knight should. Steady as stone. I must leave no stone unturned.
must leave no stone unturned. पता नहीं कहाँ फंस गया। टेलीपोर्ट मेरा मेन कैरेक्टर मर गया। अब यार पता नहीं हम कैसे काम फंस गए यहाँ पे। बार फील हो जा रहा है। मार जरूर फाइनली मेरे सारे कैरेक्टर मर गए। Leave it all to me. मेरे कैरेक्टर चेंज हो जाए। लड़ने के लिए वो पहले कैरेक्टर रेडी करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। अब निकला। Bombs away! आजा, कब से अंदर फंसा हुआ था। आजा तेरी Freeze! This moment will be frozen in time. Steady as stone. Cool it! Dodge this! Cool it! Go! Freeze! I must leave no stone unturned. Dodge this! Freeze! Oh, so sorry.
मारे भाई। एक ही मॉन्स्टर को मैंने 3 बार मारा, तीनों बार हील हो गया। अब जाके पता नहीं कहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ है, सामने वाला खोलते हैं। एक मिशन हो गया, बाकी का पार्ट एक करने में हालत खराब।
टेलीपोर्ट है। अच्छा ये वाला खोलना है। पानी में नहीं है, ऊपर चेहरा पानी में हुआ ना, ऐसे कैसे कहाँ कहाँ घुसता रहता है। थोड़ा सा मेरा कैरेक्टर भयंकर लग रहा है। लैग हो रहा है। आगे ऐसे कैसे Time to clean up. Leave it all to me. Dodge this! Freeze! तेरी अम्मा की चूते, जान क्या बचा, जान का दुश्मन बन गया ये बुढ़ी का। हाँ भाई, पूरा किताब पढ़ते आज तो।
ये बुक पढ़ रहा था शायद से। टेलीपोर्टर किधर है? चांद पे पहुंचा दे भाई आदमी को। ये रहा। What's the hurry? खुल गया। अब इधर के सारे खोल के आएंगे ये तीनों, और यहाँ के ये दोनों भी। पहले इधर का करते हैं। अरे नहीं, इसके अंदर घुस जाएंगे। नेविगेट, टेलीपोर्ट। क्यों नहीं हो सकता टेलीपोर्ट? अच्छा ये अंडरग्राउंड में, इसलिए नहीं हो सकता। ऊपर वाला तो नहीं है, ये भी अंडरग्राउंड में है। अब हो जाएगा टेलीपोर्ट। यहाँ निकलना, यहाँ अबे यार चश्मा पे क्या लग जाता है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तेरी ऐसी तैसी हार्पिक से साफ करे क्या? अब सही है, चलो। तू है कहाँ? रुक कर देखता हूँ। टेलीपोर्टर मुझे वो दिला दे, वो क्या नाम है उसका, लिली करके कुछ है। तू है? हाँ भाई, मुझे को वो प्लीज दिला दे। क्या फ्लावर है, उसका कुछ नाम है लिली करके। है? एक जुड़वा फ्लावर है, हैं? जुड़वा बैगन। जुड़वा। अभी कहाँ है? अरे भाई सामने दोनों का सेम कैरेक्टर है। वही तो इसी का बोला, जुड़वा। खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा चल
वाला कहाँ है? मैं आज सारा टेलीपोर्टर खोल देगा अंडर वाटर का। एक यहाँ पे है। हेलो गाइस, आई एम अंडर द वाटर। कुत्ते तू उनको क्यों मारने लगा? इनको मारना सच में इजी है, देखो कुछ नहीं करना। पहले तो इससे पावर लेना है एंड देन ऐसे मारता है, ऐसे मार। ये देख, एक बार में हेल्थ जाएगा इसका। ये कितना हेल्थ गया, ये देख। हाँ ये मार। कछुए की औलाद। अभी देख मछलियों जैसा डुबकी मारे थे, देख ऊपर की साइड जाएंगे और मछलियों जैसा मारे। नहीं मारा है फिर से वंस मारने के चक्कर में ये रहा एक और टेलीपोर्टर। ये भी खुल गया। अब नेक्स्ट में को जाना है अपने यहाँ से टेलीपोर्ट करके। क्या मैं इधर जा सकता है? इधर भी है, पहले इधर। अंदर है? नहीं 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 नहीं, बाहर चलो बाहर चलो, अंदर नहीं है। अरे फक आ गया। जाओ अंदर रहने का। ये बार बार पानी के बाहर निकलता डॉल्फिन की तरह। इतना रियली में पानी के अंदर ऐसा शहर मिल जाए तो क्या फायदा है? इंसान तो इतनी देर पानी में नहीं रह सकते। संबेरीन से रह सकते, संबो करी ये बात। चलो फिर सुनाई तो नहीं दिया ना। क्या बोला? अच्छा नहीं थी। नहीं बोल ना, बोल। ये वाला भी खोलना भाई। ये एक मैप के लिए इतना सारा स्टैचू है। इधर भी स्टैचू, इधर भी स्टैचू। ये वाला भी खोल गया। पागल है। तू लेने क्या आया इधर मैप में?
लिली फ्लावर लिली फ्लावर सुना सुना लग रहा है। राजा वो दांत भिजवा दे दांत हाँ डोमिन में जाना पड़ेगा। चल चल जल्दी चल जल्दी चल 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 टेलीपोर्ट हाँ रुक एक सेकंड टेलीपोर्ट खोल दे। ये लास्ट ये भी खुल गया। अब सारे खुल गए अंदर जाओ वो तो और एक ये बचा बस बाद में करेंगे ये वाला। किधर गया तू? मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन सा डोमेन में था वो। हाथी कितना चेक कर। लेवल अप 29 लेवल का हो गया। मैप में ढूंढना पड़ेगा। आप हो जाओ जरा मैं बीच में आ जाऊंगा कौन से डोमेन है ये तो देखने पे। एक सेकंड इसमें हाथी के दांत नहीं है। अब इधर ही किसी में तो था इसमें शायद। हाँ इसमें है टेलीपोर्ट कर इसमें है पर वो लकड़ी वाला है वुडन वाला है। Cryo is always far more effective in the rain. This is going to get interesting. इधर आ मेरे पास। क्या यो इसमें हाथी के दांत है पर वो वुडन वाला है लकड़ी वाला। Seems all the other knights already have their hands full. है दूसरा वाला देख उसमें दूसरा वाला प्लस पर है दोनों तेरा करा तेरा भाई है ध्यान से देख ये दूसरा नीचे वाला। कर बाकी हाँ मिल गया ये वाला ब्लैक वाला भी है। अबे तू तो काम का सबसे नीचे वाला सिलेक्ट कर सबसे नीचे वाला मतलब जो तीसरे नंबर पे दिख रहा है ना वैली थर्ड उसको सिलेक्ट करना जिसमें गोल्डन वाला दांत भी है और वाइट कलर का उसको सिलेक्ट कर। पर वो तो 59 लेवल दिखा रहा है। हाँ, तो दोनों वाला सिलेक्ट कर दे। ये वाला सिलेक्ट कर रहा मैं डोमेन ऑफ क्या है फॉरबिडी जो भी लिखा वैली सेकंड। ठीक है ना है सिलेक्ट कर रहा कॉप कंफर्म रेडी कर। आई क्या हम दो नहीं ले सकते? ठीक है तो मैं ये ले तो बदल चल कर लिया चेंज। तेरी रेडी कर दी रेडी नहीं करते काहे? मुझे कुछ तो चाहिए। हाँ वो फ्लावर दिलाते भाई कैसे भी करके लिली फ्लावर चाहिए भाई। वो लिली फ्लावर तो कहीं भी मिल जाता है रे। Dodge this! अबे क्या चुमके बच रहे हैं Wipe out! ब्लूटूथ की बैटरी गई। Go!
Dodge this! Bombs away! As a good knight should. Steady as stone. I'll catch up. Frostbite. Dodge this! दो मिला और चाहिए। देखता हूँ रुक जाएगा फिर देखिएगा क्या पता और चाहिए। ठीक पैदल नहीं है अभी तक। मैसेज करता है। हाँ 6 लड्डू चाहिए। चल 6 लड्डू। नहीं अभी 3 और चाहिए चल 3 और चाहिए वापस लाना है। चल वापस 3 लड्डू भी चाहिए। 3 और चाहिए मतलब 2 बार खेलना पड़ेगा। अरे 2 मिनट में खत्म कर देंगे। हेलो डीसी का कुत्ता। हेलो डीसी का साला कोतरा कॉल करो तब आता है। अबे तू लेके आना भाई दूसरा कैरेक्टर में कोई चेंज करना पड़ेगा। रुक जा कौन सा कैरेक्टर ले इस बार। ये वाला। अरे सीनू हाँ आगे मैं याद किया। रुक अभी स्टार्ट मत करना रुक जा। सेंसर ग्लिच। कौन सा? अबे तू बैक हो गया। कौन आ गया तुम लोग के इंटरनेट को क्या हो रहा है? ठीक है इंटरनेट ठीक है। ये पता नहीं कहाँ चला गया था। चल अरे चल भैया आज तेरे बोलने पर डिस्कॉर्ड पे भी लाइव चल। अरे वाह क्या बात है। Dodge this! This smoke will be frozen. अरे वो वाला वीडियो भाई आवाज क्यों मत देख लाइव स्ट्रीम देख फैजल आज। ये मैं तो सच्चे लगा रहा हूँ। Teamwork is dreamwork. क्या भाई ट्रेडिंग चालू? अरे ना समझ गया 50 रुपए से 3000 मंगाया नहीं है। हाँ वो उसी का है पर अलग गेम है। उसी ऐप में पर अलग गेम है। 50 रुपए से बोनस दिया था खेलने के लिए मैंने उससे 3000 बना लिया। बताओ कैसा अरे क्या गेम वालों को पछतावा तो होनी चाहिए ना दिया की। क्या यार आज तुम लोग खाली 2 जन हो क्या? हाँ हाइप बना देंगे गेम पॉपुलर हो जाएगा। आजा गेम को पॉपुलर करता है।
हमारी अच्छी Oh, so sorry. अबे मैं उसमें फंस गया था। यहाँ मैच खत्म हो गया, सब मर गया। चल चल जल्दी बाहर आ एक और चाहिए जल्दी, एक लाड़ो भी चाहिए इसके बाद। यहीं से कंटिन्यू करते ना, बाहर क्या है? यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन आता ही नहीं, मुझे बाहर आना पड़ता है। तू बाहर ही रुक, मैं तुझे बाहर से अंदर लेता। टीममेट लीव डोमेन, कुत्ता कहीं का लीव कर दिया, नहीं हो रहा। साले कुछ आजा चंदा मत करो, बस मत करो, मत करो। बहुत कसम से मस्त लग रहा है। बहुत बुरे लग रहे हो, बहुत मत मस्त करो। करो, बहुत मस्त। क्या हरामी है तू। अबे जाना, इनवाइट करना। मेरे को फिर से चेंज अब बाहर करना निकल। पड़ेगा कैरेक्टर, इससे अच्छा मैं अभी कर लेता। अब जाएंगे। झूले प्यार से। यूं करो, यूं अबे चलो, मेरे को उसका यूट्यूब चैनल मिला, मेरे को भी मिला है, मालूम है, हम देखा था उसका वीडियो। तो समझ गया। हैकिंग वाली का हैकिंग कर दी जाके पहाड़ वहाड़ पे। हैकिंग की हाइकिंग हाइकिंग ब्रो, अच्छा हाँ। हाइकिंग देखा था। हैकिंग नहीं देखा। पहाड़ पे hacking होती है, पहाड़ पे देखा hacking। क्यों देखा? मैं भी सोचा। हाँ तो क्या आराम है। अरे पहाड़ अरे पे गड़बड़ हो जाता है। हाले मोटा तेरी फील्ड की ऐसी नहीं कहीं देखे, उसका सीन नहीं खुलना, सीन नहीं जाके खोल। सब मिलके इसको मार रहे, देखना। सब मिलके इसको मार रहे हैं, हम किसी तरह साइड में खड़े हैं। As a dutiful maid would. अभी देख, भुजिया पापड़ी बना रहा था मैं। देख अब देख, तेरे को देख कैसे छुटकारा दिलाता हूँ। तेरे को रोस्ट बहुत मिला कर दिया था रे कल में। पहला बोलता ऐड आएगा, फिर मैं बोला कौन सा तेरे चैनल पे ऐड आएगा, छोड़। भाई बहुत गंदा रोस्ट था। जानबूझ कर वो रोस्ट हुआ था। हाय गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू रोस्ट कैसे करें। आपको ब्रेड लेना है। ओ सॉरी, सीनू को रोस्ट करने की बात चल रही थी। अबे सीनू, हेलो, हाँ As a good night तेरे पास एक should. फोकट अकाउंट है ना, खाली एकदम। फोकट का कोई अकाउंट है एकदम खाली, जिसमें मैं डाल सकूं। अबे यार, ये पहलू में पैक कर दे रहा है। Leave it all to me. कौन हो जाएगा, इससे लेना। क्या बोलते, क्या नाम था उसका यार, तेरा दोस्त है ना, भूल गया, मेरा भी दोस्त है वो। क्या क्या नाम बता उसका? ना तेरे फेसबुक। हाँ फैजू। हेलो गाइस, मैं मुंबई आया था फैजू से मिलने। ये फैजू भाई तो मिले नहीं, पर ये बहुत सी भरवा मिल गया। पता है मेरे को कब होता है। सीनू लड्डू ढूंढ, लड्डू चाहिए सीनू, लड्डू लाडू। हाँ मेरे पास है। हाँ दिला रहे। ये देखिए, दोनों जन इसमें मजा कर रहा है एकदम। अरे सीनू, दोनों उसमें मजा कर रहा है खूबे।
Hello guys, I'm under the water. हेलो गाइस आई एम अंडर द वाटर लुलुलुलुलुलुलु। हैं लुलु कहाँ से आया बे? पानी में घुसा है या दो टांगों के बीच में? ये होती है रोस्टिंग। आज हम आपको सिखाएंगे रोस्टिंग की रोस्टिंग। हेलो गाइस आई एम वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। कैसा बोलता है सुनो? वेलकम टू गाइस। वेलकम टू माय गाइस चैनल। नहीं, हेलो हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। कसम से पहले बहुत गंदा हंसता है, मत हंसा। क्या करूं, मोबाइल एकदम नजदीक रखा हुआ है, बर्ड्स भी नहीं लगा रहा हूँ। क्या बात कर दी? ले रहा है तू दे रहा है। आईफोन ले रखा है, बर्ड्स की क्या हाँ जरूरत? चलेगा। चलेगा। मादर चोद तू दिखा रहा साले। भाई वो मजे ले रहा, कौन बताया इसको? कौन था वो? जिसने मुड़ तीनों होगा भाई वो। अरे उसका असली नाम मत लिया कर, अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ मैं मॉन्स्टर को करने क्या आए थे भूल गए। अबे लड्डू लेने, लड्डू लाओ। टुनटुन मौसी की जवानी फोटो मैंने देखा, आज तेजस ने मेरे को दिखाया। अरे वो तो मैंने भेजा था तुझे पेंटिंग। अबे हाँ तेरा भी देखा था। ये लाड़ो नहीं दे रही, लाड़ो नहीं दे रही है। अबे लाड़ो तब देगी जब हम सोलो जाएंगे। जब मेरे को सोलो जाना पड़ेगा। लाड़ो नहीं दे रही। उसका नाम मेजोरी है या जो भी है, मेजोरी नाम है ना? हम तो लाड़ो बोलेंगे, लाड़ो। हमको तो लाड़ो लाड़ो बोलने में थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ, बड़ा बोल रहा। आप ही लीजिए। सुनो, कोई स्ट्रिंग पे जाके हैशटैग लगा दे ओनली 18 प्लस। अबे नहीं, वो तो अगर मतलब 18 के नीचे भी कोई नहीं देखता। अरे बाहर भी कहाँ से बात कर रही? तो 18 की बात करता है, 18 से नीचे वाले भी नहीं देखेंगे। अबे तो फिर 10-15 के साथ आ जाते हैं। 18 प्लस की बात कर, 18 लोग भी नहीं देख रहे। अबे सीनू, ये मजे तो कुछ दे नहीं रही, मजे नहीं दे रही है। हाँ यहाँ नहीं मिलेगा। वो नहीं दे रही। 586। चल आप 70 रुपया मिला, 8 8 होगा। वो अंडे इधर मिलते हैं, इधर कोई डोमेन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तेजस, हेलो तेजस, तेरा लैपटॉप मेरे को कुरियर कर दे। तू मोबाइल से खेलेगा, मैं लैपटॉप से खेलूंगा। हाँ भाई, मेरा लैपटॉप धुआं धुआं फूकेगा, फुकवाएगा तो बता। फ्रीज में रख के खेलूंगा। अबे किधर लेकिन फ्रीज बंद कर क्या? कहाँ क्या वो वाला? भाई बैगन, ये तो 30 सुनो उसको बैगन चाहिए। तू ही कर सकता है। अरे तुम दोनों में किसका है? इसका ये सारा सुबह से खेल रहा, मालूम तुझे? गद्दारी कर रहे आप में खेला कर साथ में। सुबह से खेल रहा है, इतना लेवल बढ़ा बोलता है। खेलेंगे साथ में, लंगा बात करते हाथ में। ऐसे बोलता है भाई, मेरा वर्ल्ड लेवल 3 हो जाएगा तो फिर तू नहीं खेल पाएगा। वर्ल्ड लेवल 3 हो भी गया और हो भी गया। भाई का बर्थडे। भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, दब 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 भाई का बर्थडे। भाई का बर्थडे। तेरा बर्थडे होगा तो यही करेंगे सीनू। फोटो वीडियो बना के भेजेंगे भैया। वही जान से मार दूंगा। मिल गया, हम तो यही करेंगे। अबे सीनू, सीनू तेजस का बर्थडे आएगा ना तो इमेजिन करके यही करेंगे, तेजस को इमेजिन करके। अबे यहाँ दिया है डोमेन फॉर सिर्फ ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को खुला रहेगा आपका ये आंड वाला डोमेन। आंड वाला डोमेन? भाई एक बात बताऊं,
तो आज तो संडे है। हेलो आज तो संडे भाई, गेम खेलने के लिए गेम सुन तो, गेम खेलने के लिए बोनस दिया था मेरे को 50 रुपया, मैंने उसको 1050 रुपया कर दिया। अभी बोल क्या करूं? मेरे को दे दे। 500 मुझे भेज, 200 इसको भेज, बाकी तू रख ले जितना हाँ, तुझे चाहिए। रुक जा, 2000 करने दे, सब लोग 500 लेंगे। आजा, मिल गया। आजा आजा, संडे है, मैं तो भूल ही गया था। मिल गया। हाँ मालूम, मिल गया मिल गया मिल गया। आ रहा मैं रुद्राया का तू इधर। हाँ हमें पिएगा। ट्रेन भाई आ कर रहा है वो। आजा। यार 1117 रुपया हो गया। अरे फैजल, तू आईफोन कब ले रहा? बस बहुत टाइम है, बकरे तक खोलूंगा। चल चीनू, कहाँ है तू? तेरे ऐज में। नहीं भाई, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं घुसा ही नहीं, मेरे को रास्ता ही नहीं दिखा हुआ। तेजा सच में देख रहा है क्या तू पीछे मुड़ के? हाँ वही देख रहा है तुमसे। कितने चाहिए तुम्हें? 6। तो चलो यहाँ पे 6000 चाहिए उसको। रुको अभी भी कैरेक्टर सिलेक्ट करने दे ब्रो। चल फिर भी यहाँ से करना। अबे सीनू, एक बंदा है सीनू, यार एक रील पे एक बंदा को देखा होगा, वो नेपाली लड़की के साथ रहता है, तेरे को मैं दिखाया था। चलना कुत्ते। रेडी दे। समझा किसकी बात कर रहा हूँ? भाई वो सबके साथ वीडियो बनाता है क्या? आज यूट्यूब पे मैं किसी और लड़की के साथ देखा उसको लाइव स्ट्रीम करते हुए। वो भी रील्स बनाती है। क्या रचित्रो नाम है उसका? हाँ 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 वही है। हाँ। मैं खुद रचित्रो को देख रहा था आज भाई। वो नेपाली लड़की के साथ किया ठीक है भाई, एक गोरी लड़की अलग आ गई। वो तो कौन, वो दोनों एक दूसरे को झूठा कह रहे थे। बताओ कौन है वो? उसका वीडियो है मेरे पास सेव किया हुआ। नहीं, अब इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? हाँ मैं भी देख रहा था आज उसका। मैं बोला मैं नेपाली लड़की के साथ रहता, ये कौन है? बाकी इसको मैं जानता कौन है। इसके रील देखता हूँ, इसका अच्छा रहता है इसका रील। प्रैंक वाली वीडियो देखी उसके लाइव में, बंदों ने बोला कि नेपाली लड़की के ऊपर वो प्रैंक करो, उसको आई लव यू बोलो, ठीक है? उसने बोला और वो लड़की ने एक्सेप्ट भी कर दिया, ठीक है? अब फिर वो बोलता है कि भाई ये मजाक कर रहा था, चैट नहीं बोला तो रोते रोते गई थी। फिर पसंद करती हो ब्रो? लगता है ब्रो पे 10-20 लड़कियां जान फेंकी होगी हैं, ये रिजेक्ट कर। मैं इधर सोफा लगा के सो जाता, तू ही मार ले। चलो जिसको मारने जा रहे Time to clean up. अबे मैं अकेला ही काफी हूँ। तू मान मेरी बात। देख सब कुछ निपटा दिया, तेरे पास वाले को क्या ही मारूंगा। देख खत्म, चैलेंज खत्म। मैं एक बार मारेगा, मैं स्टार्ट करके और साइड में यहाँ पेड़ के पास आकर बैठ जाएगा। चलेगा ब्रो। अबे सीनू, और मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ ना, उसके कमेंट में जाके मैं मैसेज कर दूं कि मैं आपके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, एडिट किया हूँ, उसके बाद मेरी स्टोरी व्यूज फटफट बढ़ जाते हैं। अबे बोला तो कर, यहीं पे मैं लीव कर गया। फिर उस टाइम इसको बोले रुक जा, तो उस टाइम पे भागा, फिर भाग गया। वहीं पे रिस्टार्ट होता, वहीं से कंटिन्यू का ऑप्शन है। तेरी गुद्दी पे एक लात मारेंगे। आ इधर चल समीर फुद्दी। एक मिनट के लिए कोई आ रहा है? मुझे 2 मिला। मुझे वो चाहिए, क्या बोलते वो, लिली फ्लावर भी चाहिए इसके बाद। तू दिलाएगा लिली फ्लावर? मेरा पता है, वो क्या होता है? मेरा लैपटॉप फूकने से पहले मेरा चार्जर फूकेगा। कैसे?
हाँ सही बोल रहा है तू। वो धुआं छोड़ेगा, तू लिख के मान भाई। तो मालूम मेरा मेरा जब मैंने लैपटॉप सलंग मैंने वो रिकॉर्ड बना दिया था 72 आवर्स, ठीक है, सलंग चालू रहा था वो। उसके बाद जैसे ही मैंने बटन बंद करने गया, भट्ट से चिंगारी उठती। मैं बोलता था वो तो बच गया, चार्जर नहीं फूटा था। वो जो पावर केबल रहती है ना, जो चार्जर के साथ अटैच रहती है, वो फूकी थी। चार्जर फूकता तो लग गया था मेरा 2,000 2,500 का नुकसान। लैपटॉप से पहले वो चार्जर फूकेगा। तेरा तो फूकेगा, वो बात तो है, क्योंकि तू 100% चार्ज होने के बाद भी चार्ज पे लगाता है। मैं जा नहीं पा रहा पेड़ वो के चार्ज में निकालता ही नहीं वो। पास। मैं चार्ज में लगा के खेलता। भाई की स्पीड देख रहा है। यूट्यूबर है क्या? What's the भाई hurry? की स्पीड। एक काम करो देखो, एक काम कर सुनो, जैसे इम्पैक्ट अगर एप्पल विजन प्रो में खेलेंगे तो कैसा लगेगा ब्रो? मजा ही आएगा। वैसे ही जैसे PS5। नहीं यार, अरे भाई PS5 इसकी बात ही अलग है एप्पल विजन प्रो की। तूने गलत बोला। वैसे ही जैसे हमें सपने में लगता है। हाँ सही बोला। एप्पल विजन वही ना जो अभी भी लॉन्च हुआ है, नया वाला। हाँ, मैं फोन आपका 3-4 टैब खोल के हवा में लटका दूंगा। अबे तूने देखा नहीं, वो बंदे ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बोला कि आप चाहे तो ब्राउजर यूज करते बेडरूम में भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। कमेंट में इतने सारे लोगों ने वो वाला वो गिफ्ट भेजे थे। मुझे अरे उसमें कैसे तीनों कैसे है? हेलो, उसको ना फिर बैक कर दिया। देखो जाएंगे अगर वो कमरे में जाएंगे अपने आप को, तब आदित्य क्या आवाज आ रहा है दोनों का माइक से, घर 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 घर। कहाँ आ रहा? ये इसके इसमें से आ रहा है, आपसे मेरे को भी आ रहा है। मेरे को तो नहीं आ रहा। अच्छा। तेरे को कहाँ से आएगा साले? तेरे से आ रहा है, तेरे को कहाँ से आएगा? क्या मतलब मेरे से आ रहा? चल बुलाना कहते जल्दी कर। अभी भी आ कल रहा। जाके हेडफोन ले ले। हाँ वो बोला है मेरे को कि हेलो तेरा हेलो। मेरा हेडफोन वो उसका है, हाइपर बुक है क्या? हेलो 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 हेलो, क्या पहना है? सुनना, मेरा हेडफोन हाइपर का है। ठीक है। वो हाइपर वेस्ट। तुझसे नाम नहीं पूछा था मैंने बोला था लिंक भेज। हाइपर के टॉप पे आता है ब्रो। 3,500 कौन सा लिंक? शॉपिंग का शॉपिंग। हेलो, मेरा आवाज जा रहा है क्या? जा रहा है ना, जा रहा है, बस किसको जा रहा है ये नहीं पता। मेरे को तो नहीं आ रहा। साला तो फिर तू बोल कैसा रहा है? वो तो मेरे बात पे रिएक्ट कर रहा है। तो फिर तू एक काम कर सीनू, डिस्कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कराएगा। चिप्स मांग रहा गाइस। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। पाक खाओगे? तू खाएगा? आजा तेजा, जल्दी दे उसको। I must leave no stone unturned. बेशक ये हरामी से तलवार ही नहीं उठता तो चला। अरे नहीं, मेरे पास तलवार है, मेरे भी सलवार में तलवार है। हेलो वो रचित्रो का ही तो डायलॉग है। हेलो हाँ, उसी का है। वो छक्के के साथ रहता तो छक्का बोल भी है ना, मेरे भी सलवार में तलवार है। अभी मैंने तुझे एक बंदे की कमेंट पढ़वाऊंगा, ठीक है? एक तो उसने एला ने लिखा था कि तेरी अम्मी के साथ वही वाला, ठीक है? तो वो लड़के ने बोला तूने तेरी अम्मी के साथ। अच्छा हाँ देखा देखा है हम ठीक है भी देखा, मैं भी देखा हूँ। वो सिखाता है, उसके बच्चा भी बहुत आरामी रहता है, उसको मुंह बंद कर देता है। अब उसी के ऊपर रोस्ट हो जाता है रिटर्न। अब वो कुछ बोल भी नहीं पाता।
एला भाई वीडियो, लेकिन वीडियो डाला किसने? लाइव स्ट्रीम था क्या? अगर खुद रहता तो अपलोड करता नहीं। भाई जिसने भी किया भाई कसम से भाई एक नंबर रोस्ट किया। पहली बार इतना मस्त रोस्ट देखा था। तेजस तेरी टांगे गया था तोड़ दूसरे देंगे। को वीडियो करने। अबे अब हो गया, मेरा गया था। कंप्लीट हो गया। अब अबे अब तेरे माइक से अब घड़घड़ मिल रहा है इधर। सुन अब मेयोनीज के वो नहीं चाहिए। मेरे को लगा अभी एक और खेलना है, फिर से बाहर भाग के। अब बोलेगा एक और लगाओ ना तो चप्पल से मारेंगे। अबे तुम लोग का माइक से घड़गुड़ घड़गुड़ आ रहा है यार। मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा। अरे महंगा वाला एयरफोन ले ले, फिर बोलेगा बहुत मारूंगा मेरे को। तेरे को कहाँ से सुनाई देगा रे? मतलब मेरे में से ही आ रहा है इसलिए मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है ना। कड़गड़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो कर रहे कभी कभी तुम दोनों गोल मिल रहे हैं। अरे वो हमारा शायद से वो डोमेन में जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है ना, इसीलिए सोलो लेवलिंग देखा है। हाँ, वो जो डोर खुल जाता है वही वही डोर में अंदर जाता मेरे है। पास करंट चल सुनो सीनू सुनो सुनो, देख मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। ठीक है, इसका नाम है काला लिली। काला लुल्ली। ये मिलेगा वो तो फैजल के पास है। लोकल नहीं नहीं, लोकल स्पेशलिटी मॉन्स्टर फाउंड इन स्प्रिंगवेल। वो अब जरूर आ रहा, डिस्कनेक्ट यार करके फिर से आओ यार तुम लोग। यहाँ यहाँ पे मिलेगा। अरे अच्छा हुआ एयरफोन नहीं लगाया हूँ मैं, वरना मेरी बहन हो जाती। तो मेरे को तो नहीं आ रही, तुझे आ रही क्या तेजस? नहीं तो मुझे बस 14 चाहिए, बस मुझे कहीं से भी 14 दिला। इधर ही कहाँ है? मिलेगा स्प्रिंग वैली, यही तो है। कहाँ गया अभी? क्या नाम बताया उस फ्लावर का? काला लिली। काला लुल्ली फैजल के पास मिलेगा। अबे काला लिली बोला नहीं। Feather has gone guys। कहाँ है अभी? नहीं मिल रहा। बस तू रुक, तेरा भाई अभी बस मुझे देखता रुक, पर मुझे नहीं पता मिलेगा तो। काला लुल्ली ओके, ये तो मिंट है। भाई स्प्रिंग नू आ वैली। रहा है। हाँ आ रहा है, स्प्रिंग वैली तो यही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ टेलीपोर्ट कर। अब नहीं मिला ना तो भी सीधा मारेगा सर्च यूट्यूब पे। ये तो नहीं है, रुक सीन जा। हूँ। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 कितना सारा है यहाँ पे। कहाँ कहाँ कहाँ? आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। मैं कितना सारा मैं भाई, दौड़ दो रहा दो यहाँ है, तीन। हाँ बोल है। भाई। दो वहां में कैसे हुए? दो और एक तीन। कहाँ है? हाँ वो है शायद। और तो मछलियाँ भी हैं, मछली पकड़ेगा। दो हो गए और और यहाँ पे यहीं पे है जितना भी है। ओके ब्रो। आज स्टोरी लगाना सीनू एक नंबर था। अबे अंधा जहाँ टेलीपोर्ट किया ये देख, तू दौड़ के आया क्या उतने दूर से? मैं उड़ के आया हूँ। अबे मैं इतने सारे कलेक्ट ही कर रहा हूँ सीधे। वो देख उधर भी है उस तरफ। हाँ अभी 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 तो अपने मैप में भी जाके यही जगह पे टेलीपोर्ट होके जाके ले ले। मेरे मैप में एक दिन में इतना ही मिलेगा।
तेरे ही मैप में कैरेक्टर को अपग्रेड कर दूंगा तेरे। चौक इसमें सबके मैप का अलग अलग कैरेक्टर अपग्रेड करना पड़ता है। नहीं रे, ये दुनिया से परे बात करता है। मैं खेला नहीं हूँ ना। क्या है तू? जादू है भोसड़ी को, ज्ञान है आप। सही बोलो, जिहान है हाँ। मास्टर तेंताई है आप, हेंटाई की तेंताई। हैं हेंटाई में आ रहा। अबे तेंताई की हेंटाई की तेंताई। ऐसा Dodge this! पक्का। ये बन गया चिकन कोरमा। Freeze! और ये इसका नाम क्या है? मात्सुताके मीट रोल। मात्सुताके मीट रोल्स खाएगा? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। पढ़ भी आ गया। मैं पहली बार कुछ सुन रहा हूँ। मात्सुताके क्या था? मीट रोल। मीट रोल। जोमेटो पर सर्च है तो मेरे घर का एड्रेस भेज रहा होगा। चीनू अब मुझे ये वाला वो दिखा दिला दे फूड। इसका नाम है विंड व्हील अल्टर। ठीक है, ये मुझे ये बता रहा है फाउंड नियर द स्टैचू ऑफ द 7-8 विंड राइज, फाउंड अंडर ट्रीज इन द वाइल्ड, फाउंड इन स्टॉर्म टेरर लेयर। हेलो ब्रो। भाई अभी खाना बना रहा, मैं किसी का नहीं हेलो सुनेगा। हेलो गाइस, आई एम अंडर वाटर। बार मेरा हेल्थ चला जाता है। अब जाएगा ही नहीं, इतना सारा खाना बना कर रख दिया। जहाँ हेल्थ जाएगा पहले बक साला ऑटो में नहीं आ रहा। ऑटोमेटिक रखो, मैं नहीं बनाएगा इसे। सेटिंग करना। गेहूँ मिला। अब बता क्या चाहिए तुझे? इसका नाम है विंड व्हील एस्टर। ये बता रहा है फाउंड साइड में मिलेगा, फाउंड अंडर ट्रीज इन द वाइल्ड, फाउंड इन स्टॉर्म टेरर लेयर। बता। मॉन्स्टर के अंदर मिलेगा। स्टॉर्म टेरर लेयर तो बता रहा है कि हाँ स्टॉर्म टेरर लेयर। वो कोने में लग रहा है मुझे। चल कोने में है शायद। कौन से कोने में? देख ना कोने में स्टॉर्म टेरर लेयर लिखा है। मैं तुम लोग के स्ट्रीम पे हूँ। क्या बात कर? स्टॉर्म टेरर लेयर। और चाहिए क्या तुझे? वही फ्लावर विंड एल एस्टर, विंड व्हील एस्टर। अच्छा फ्लावर है पूरे पास। A reward on the road. वैसा फ्लावर कहाँ ढूंढा? उधर ही होगा।
होगा इधर, हम गलत आ गए। ये साइड साइड में ढूंढ, उधर कुछ नहीं है। स्टॉर्म टेरर के लोकेशन पे तो कुछ है ही नहीं, इधर ही कहीं होगा। ऊपर जाने के बाद तो फिर नीचे आने का होता, वहाँ ऐसा हवा चलता रहता। तुम्हारी ऐसी मैं नीचे ही हूँ। थोड़े बहुत तो मिले, मिला ना? थोड़े बहुत मिले और ढूंढना है। ये है क्या? अच्छा ये चाहिए तुझे, विंडविल एस्टर। आजा यहाँ पे है, यहाँ 2-3 है। अबे यार 4 है यहाँ पे। ये मैं तुझे दिलाता, यहाँ से उठा ले और बाकी का लोकेशन में तो मालूम है। यहाँ टेलीपोर्ट आ जा, टेलीपोर्ट कर यहाँ। बाकी का लोकेशन में तो मालूम है। यहाँ पे बहुत सारे हैं और बाकी और चाहिए क्या? देखता हूँ, रुक जा कितने और चाहिए। और चाहिए तो यहाँ पे आ जा। और चाहिए। यहाँ पे टेलीपोर्ट कर, मैं बताता तेरे को सब जगह मालूम है ये कहाँ कहाँ मिलता है। वो मैंने YouTube पे देख लिया था एक बार, इसलिए मालूम। हाँ वो रहा ये रहा। इधर भी है शायद से। नहीं इधर नहीं है, यहाँ पे है। ये देख यहाँ पे है और भी है इधर। अबे नहीं, ये तो कोई और ही फ्लावर है। हाँ इधर है, इधर 3 और है। अभी तो अब नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 है। तीन ही और चाहिए थे। एक और मिल गया। इससे क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे भी है, ये आग वाला चलाना है एक बार। यहाँ पे देख मेरे पास, ये आग वाला चलाइए जल्दी आग की तरह, वरना वो बुझ जाएगा। तू भी चला सकता है तेरा नहीं। मतलब मेरे को ये दोनों का करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अलग है और एक ये कैरेक्टर, एक लीजा और एक एम्बर चाहिए और वहाँ के लिए लीजा यहाँ से मार देगी क्या? You're in for a little shock. Blitz. नहीं मार रही, उधर ही जाना पड़ेगा इसके वजह से। जिंदा है कौन? इधर बोल रहा था। तेजस तो एकदम शांत हो गया। उसको मैं नींद आती होगी, अब 3 बज गए ना। चल बे तेजस जुड़वा कहाँ है जुड़वा?
स्टार दिखा रहा है, स्टार है किधर? अच्छा वो रहा, उसको कैसे ले हम? मेरे को कांधे पे उठाइए। मालूम नहीं। अब यार काफ़ी ऊंचा है, उसको लेने के लिए मेरे को पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ से जंप मारना पड़ेगा। हवा ज्यादा चलता है क्या? चल नहीं, पट्टी ज़्यादा है, चढ़ते चढ़ते मर जाते हैं। किसकी? कैसे बे? ब्रीथिंग जाती है उधर, स्टेमिना रहता है इधर, एक स्टेमिना बार, वो अगर रेड हो गया हाँ तो बताना ये तेरे साथ क्या हुआ तो। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा था। ऐसा गिर रहा था भाई उधर से। थोड़ा रेस्ट। हाँ रेस्ट ले लेके होता है, नहीं तो फिर बूम गिर जाते हैं। अब इतना ऊंचा चढ़ गए हैं यहाँ से तो हम साला ज़्यादा ही ऊंचा चढ़ गए थे। अबे देख मैं फिर से चढ़ के बताता हूँ तो। देखिए चढ़ा और एक गिरा। फैजल देख रहा है या एडिटिंग कर? हाँ एडिटिंग कुछ नहीं है। इधर आ बत्तख मारना है, बत्तख। इनको मार, बत्तख को मारता है। बंदूक से मार, ये सब मर जाएंगे और वो लेग पीस मिलेगा। जल्दी आ, भाग जा रहे हैं। ये देख यहाँ लेग पीस खाने के लिए देख दूसरे को डाल ले। मार मार। अबे कुत्ते यहीं पे हैं, तू ये मार। पानी में देखना, यहीं पे है। कहाँ यहीं पे, और कहाँ मारा इसने? Freeze! साले हम भी फ्रीज उसको हो कहीं गए। और दिख रहा होगा। देख लेग पीस मिला, देख। साले बाकी के बत्तख को भगा दिया तूने। हाँ एक है ओपी, बहुत ओपी। एक और था, कहाँ गया? ना स्नैपड्रैगन मिला मुझे। हैं? फोन में लगा ले। क्या स्नैपड्रैगन? देख एक इसका नाम नहीं, एक उसका नाम है। ये जो ये देख इधर तेरे को दिखाता हूँ। देख इधर देख स्नैपड्रैगन। जल्दी है सीधे स्नैपड्रैगन दिखाता हूँ। इधर है। कहाँ पे? अच्छा उधर आ रहा है। क्या बोल रहा है? स्नैपड्रैगन क्लैम मत करना। देख स्नैपड्रैगन, ठीक है? पहले लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं ना, देख स्नैपड्रैगन पढ़ना तू, ठीक है? What's the hurry? मेरे फोन में दे दे भाई। ये रहा स्नैपड्रैगन। भाई हंस मार दिया। ट्रिपल 8 है क्या? तू नहीं उठा सकता क्या लेग पीस? भाई स्नैपड्रैगन ट्रिपल आदमी है। अबे दोनों को मिलते हैं अलग अलग। अच्छा हाँ दोनों का अलग अलग मिलता है। अबे वरना गेम वालों को पता है ना, अगर एक को दूंगा तो सारे मिलजुल के खाए, मिल के तो कभी खा नहीं सकते। अबे इधर बंदरों का झुंड बैठा है, इनके पास वो रेड वाला ड्रम है, फोड़ दे। इधर आ, ये देख नीचे रेड ड्रम फोड़, रेड ड्रम। जितने भी लाल ड्रम है फोड़। पास में मत जा। हाँ रेड ड्रम, हाँ अब वो वाला रेड ड्रम फोड़। एक और रेड ड्रम है। रेड ड्रम फोड़ देना बस। खत्म भाई। तुम छू भी नहीं पाओगे भाई, अब हम प्रो हो गए हैं। इतना सारा मीट इकट्ठा किया है तो कुछ बनाना तो बनता है। हाँ भाई ये बात तो सही बोला तूने। चिकन तंदूरी बना दी। मैं लॉलीपॉप। आजा मेरा भाई, तुम खा ले। मुझे पता था ये यही बोलेगा।
अबे तो ऐसा एक बोल ही रहा है वो लॉलीपॉप बनाएगा। और ब्रो तुम्हारे पास तो लॉलीपॉप है ही नहीं। मोए मोए। आजा तू भी देख ले आजा। I didn't know you were such a slacker. मुझे वो हो गया। मच्छी भात खाओगे? हर बात खाओगे हर बात। ए जॉर्ज, जॉर्ज, जॉर्ज बड़ा कीजिए। किसको? तू थोड़ा सा बहन किसका? का लौड़ा है साले क्या? कैसी कैसी बातें करता है। आग पे चढ़ जॉर्ज के जॉर्ज बड़ा किसे ये आग पे चढ़ के अपनी गांड फेंक। ठंडी लग रहा है भाई को। ये ले ले, एक और है यहाँ पे। हाँ, इसको तेरे चाय में डाल दूं। अरे एक दो कम ज्यादा पड़ेगा तो। अबे यूज भी कर लिया मेरे तो। 2 कैरेक्टर 60 लेवल के हो गए और 2 वेपन भी कर लिए 60 लेवल के। अच्छा रुकना, हम देखते अब। अरे मेरे को तो करने के लिए, लेवल अप करने के लिए ये सब खोजता है क्यों? ये मेरे को बुक्स खोजता है। चीज़ तेरे पर डिग्री ना है। मेरे को बुक्स खोजता है, ये देखिए बुक। ये मेरे को बिना बुक का लेवल अप करना है भाई। हटो ना भाई, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं। एक सेकंड में सोलो में जाके देखता, क्या पता हो जाए। अबे सीनू तेरे पर डिग्री नहीं है इसके लिए। नहीं भाई मेरे पास है डिग्री। तुझे पता है जब भी अपन कॉलेज वगैरह क्लियर करते हैं तो डिग्री देते हैं, अभी गोल्ड करके क्यों देते? गोल्ड करके नहीं। ताकि कोई उसको देख ना पाए। मैं बताता हूँ। ताकि वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ही पता होता है कि ये डिग्री कहीं काम में नहीं आने वाली, इसको अपने पिछवाड़े में डाल लो। Cool it. Freeze. Dodge this. Don't get. Oh, वाह such वाह this वाह moment. What's the? How fortunate. Fat. कि अब मेरे You're तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, डिग्री की I'll help काम you. आएगी नहीं, इसको अपने पिछवाड़े में डाल दो। बत्ती बना के गाड़ में Push डाल। your luck. This. Oh, ready when you are. बत्ती बना के डालने के लिए देता है सीनू। इसकी ग्रीन दे। अरे यार मैं कोई कैरेक्टर अपग्रेड ही नहीं कर सकता बिना वो किताबों के। वो जो होता है ना, हाँ मिलेंगे वो, मेरे को बहुत सारे चाहिए। अबे मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे भी अभी चाहिए। यार लाइब्रेरी का बहुत सारा लाइब्रेरी में घंटा मिलता है यहाँ पे। ये वाले ये गवर्नमेंट लड़का में बहुत चार मेहनत चार कर रहा मिलेंगे। है। 4 ये मिलेंगे। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है गाइस। एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दो। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है गाइस। बस उल्टा लेटने का काम और कर दे तो वायरल भी हो जाएगा। अब इसमें 6 मिल रहा, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए मेरे को। ब्राउन वाला से उतना नहीं बढ़ता है ना। अबे सीनू दुनिया का सबसे काला चीज क्या है? अफ्रीकन। ब्रो तू वॉशरूम में जा खुद और नहीं 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 नहीं, बाल। चल ब्राउन भी होता है। अबे भाई सबसे फ्यूचर काला देख बाल ले। होता है। सबसे काला बाल नहीं होता। अबे फ्यूचर देख ले भाई, उससे ज्यादा उजाला ब्राइट ब्लैक कुछ नहीं होगा। फ्यूचर देख ले अपना। ये भोसड़ी का इसको भगाओ, किसी दिन डिप्रेशन में मेरा डाल दे। फ्यूचर तो ब्राइट है, डार्क नहीं है। किसी दिन डिप्रेशन में अच्छा डाल देगा। फ्यूचर ब्राइट है तेरा। थोड़ी सी रोशनी हम पे भी बिखेर दो। वो वाला ले नहीं। ले लो मेरा। कभी सोचा है आगे चल के क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई कुछ करेगा? सीधा गाड़ी पे से उतार देता है। अरे ये सबके साथ रहेंगे तो डिप्रेशन में डाल देगा। डिप्रेशन ये आ जाएंगे जी। इस दुनिया का सबसे ज्यादा एटीट्यूड किसके पास है? मुझे नहीं मालूम।
सुनील एंड्रयू जी तुझे टेट। मालूम एंड्रू है एंड्रयू टेक उसका सरनेम टेट है ना, तो मैं पहले उसको टेट। कोई नहीं देख रहा, वो कोई नहीं देख पढ़ता रहा, था। बोल सकता है। नहीं, मैं पहले वही पढ़ता था, एंड्रयू वाला। चल इसमें 5 EXP है और 2 पर्पल वाले मिलेंगे, तो ये वाले पे चलते हैं। लेकिन साला मैंने वहाँ का एक भी टेलीपोर्ट नहीं खोला, जाए कैसे? अच्छा टेलीपोर्टल नहीं खोलते तो पैदल जाना पड़ता है वहाँ। हम्म, देखा नहीं था उस ओ दिन। ऐसा है क्या? अरे यार ढूंढवा दे यार, आजा। टेलीपोर्टर ये वाला ढूंढवा दे, ये भी ढूंढवा दे, ये भी ढूंढवा दे। क्या हुआ तेजस तेरे साथ नहीं है क्या? और इसको साला जब अबे मल्टीप्लेयर खेलते तो एक साथ रहना तो पक्की पक्की। मैं इधर यहाँ मेरा अलग ही मिशन पे लगा हूँ भाई, तगड़ा वाला। मैं नहीं जानता, तो सुबह में खेल लेना जब हम सोए रहेंगे। तो अब भी साथ है, तो अब भी साथ है। आज आज सोया तो तीनों। हाँ सो गए थे। कितने बजे सोया और उठा कब? शाम में 4 या 5 बजे उठे थे। अच्छा खाना खाने के लिए घर वाले लात मारे होंगे तो। हाँ तुझे कैसे पता? मैं भाई सबके साथ होता है, तुझे कैसे पता क्या? What's the hurry? घर वाले खुश हो गए होंगे आज घर में, आज मेरा बेटा इतना जल्दी जगा है, उन्हें कौन बताया कि सोया ही नहीं है। तुमसे नहीं लड़ना है, जाओ ना साला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? तुम्हें गलत फहमी में जी रहे नहीं हो। अबे यार ये पहले कमीने को मारना पड़ेगा। खुद की आग तो में मार खुद ही दे। जल रहे हैं, इन्हें हम क्या मारेंगे, तो खुद ही मर रहे हैं। खुद की आग लगा के खुद What's ही the जल hurry? रहे हैं। रैंक हो गया उसके साथ। हम क्या करें, तो हम क्या मारे, तो जो हम क्या डेवलपर मारे। खुद ही मर रहे हैं अपनी भाई आग लगा के। डेवलपर गेम बनाने वाले, डेवलपर गेम बनाने वाले खेल गए भाई लोग उसके साथ। हाँ मैं तो मार ही नहीं रहा हूँ, खुद डैमेज। वही हम बोले कि तेजस आ गया क्या मार रहा, बाहर आके देखे तो साला खुद आग में जल के मर रहे। पहले एक टाइम था जब माइनक्राफ्ट का कितना चलती बनती होता था, अभी देखो भाई को पूछता भी नहीं है माइनक्राफ्ट को। Dodge this! अब सीनू टेक्नो भरवा क्या हो गया भाई, साला ये नहीं डाल रहा है, रेजिडेंट इविल का पार्ट नहीं बना रहा आगे। अब वो रेजिडेंट इविल पता है तुझे कितने का है? अबे तुम्हें उसकी पड़ी रेजिडेंट इविल, सारे मेरे GTA 5 का अभी वही तक तो वीडियो नहीं डाला है। GTA का निकालना और उसका टेंशन है। What's the hurry? तुझे पता है मेरे को उसका, मैंने जब वो चैनल खोला था GTA 5 उसी से शुरू किया था। भाई पहले क्या मस्त था, तुझे पता है लॉकडाउन में रोज डालता था रात को 9 बजे। सही बोल रहा है तू। मालूम है, डेली करता, डेली मैं करता था। लॉकडाउन में कुछ काम धंधा था नहीं, डेली आता था। और लॉकडाउन में क्या ही सब्सक्राइबर बढ़े भाई उसके, मैं तो एक रात दिन में 1 मिलियन करता था। मैं रात What's the hurry? दिन में खाना खाने टाइम लेके बैठ जाता था। मैं देखता नहीं था कि नहीं खाना खाते खाते देखूंगा, तो मैं भाई देख उसका क्या सब्सक्राइबर बढ़ा था लॉकडाउन में यार, लाख 1 मिलियन 10 दिन के अंदर। पहले स्काईलॉट का देखता था खाना खाते खाते, फिर उसका देखने लगे, टेक्नो के मस्त था। और अच्छा लगता था, मतलब वैसे खाना खाते खाते एंटरटेनमेंट होता है। बाकी साला स्टोरी खुद से बनाता था वो, गेम की स्टोरी वैसी नहीं है। गेम भी वैसा नहीं। गेम भी वैसा नहीं रहा जैसा वो बनाना चाहता था। खुद ही मर गया भाई, बना नहीं पाया। पैसा आ गया भाई, घूमने फिरने में बिजी रहने लग गए। अच्छा टेक्नो के बारे में बोल तुझे रहा पता है अभी क्या हुआ था अभी? हेलो हेलो।
आवाज आ रही तुम्हें? Seems all the other knights already have their hands full. ये है ना भाई, मैं तो आ जाऊं पर ये आराम कर कहीं। अबे कहाँ हो कहाँ तुम? खेल रहे हो? साथ में खेलो ना, अपना अपना मिशन पूरा करने में लगे हो। अरे मैं मिशन पूरा नहीं कर रहा, मैं तो वो टेलीपोर्टर खोल रहा, मैं इसको बुला रहा, आजा। रुक जा मैं अभी सीक्रेट मिशन कर रहा हूँ। मैं कुछ तो ऐसा कर्र करके हुआ और आवाज भग गई। अच्छा, डिस्कॉर्ड की गलती पड़ गई। हाँ मैंने स्ट्रीम इसलिए बंद कर दिया डिस्कॉर्ड से। हाँ, डिस्कॉर्ड पे देखेगा अभी कौन, यूट्यूब से देखेंगे ताकि तेरा वॉच टाइम बढ़ जाए। इतना समझदार कब हुआ तू? टेंशन हाँ, मत ले। गान में घुस जाऊंगा तेरे दोबारा बोलेगा तो। मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे साले तुम लोग। अच्छा फैजन, मुझे एक चीज बता, तूने अपनी मूछें क्यों उड़ा ली, दाढ़ी रखी खाली? साले तुझे मेरी फोटो कौन दिखाया चूतिए? मैंने बिल्कुल नहीं भेजा। सीनू तूने दिया क्या? मैंने बिल्कुल नहीं भेजा। किसने भेजा तेरे को फोटो यार? मेरा मोबाइल में खुद के पास नहीं है भाई, मुझे भेज दे यार। अबे मेरे को पता है फिर। बोल रहा हूँ ना, तूने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। ब्लू कलर की शर्ट और नीचे क्या पहना था? नंगा था। अच्छा, नंगा था। फेसबुक पे देखा क्या रे? अरे यार कहाँ देख लिया मेरी फोटो साले? उल्टा घूम एक राज की बात बताऊं। उसने भी उल्टा घूम जा, मेरे लिए इतना कर सकता है ना, उल्टा घूम जा। ऐसा नहीं था, 20 रुपए दोगे तो रात ही बताऊंगा। हाँ मैंने उल्टा घूम वाला बनाया। उल्टा घूम जाएगा, 20 रुपए क्या करेगा लेके? और ये वाला भी था, ये वाला भी था, ये पीछे घूमो तो बता। उल्टा घूमने को बोला था, ले वाला नहीं, ये पीछे घूमने वाला भी मेरे को। फावड़े का वो सीन अच्छा लगता है, उसके दांत में फंसा के ढक्कन खोल देता है। हाँ। वो आता है उसके दांत में फंसा के कोक ओपन कर देता। 20 रुपए दोगे तो गराज की बात बताऊंगा। अबे आप फिर फंस गए। तू ताला तू हरामी कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं। कौन छुपा दिया, क्या छुपा दिया? हो गया ना, आप कहाँ हैं? आप कोई और है क्या? अच्छा एक यहाँ है। तू कैसे बच गया कुत्ते? नीचे गिर गया। ये क्या हुआ? ये क्या खुला? देख क्या खोला? कुछ तो खुला करके खुला। खुर्र करके, तेरा हमेशा खुर्र करके खुलता है। तेरे साथ मैं भी। वापस रहने दो, मत करो मत करो। वापस से करना मेरे को। पहले इसको, फिर इसकी अम्मा की जगह को, फिर इसको, फिर पहले मारे हमने ये वाला, फिर मारे हमने ये वाला, ये वाला मार के हमने कर दिया खत्म। वो शाहरुख खान के ऊपर बनाया ना, पहले हम मारे ये वाला। हाँ, फिर मारे हमने वो सलमान खान के ऊपर वो ऐश्वर्या राय का भी दिखाता है। हाँ, मुझे बहुत सारी रंगा दिखाता है। ये वाला मार के हमने कर दिए खत्म। अच्छा, जो चमकेगा उस पे मारना है। ओके।
नीचे बुखार का आता होगा। अरे तू चमकेगा किसका इंतजार कर रहा है? अबे नहीं, देखिए चमका इस पे मारे। अभी कौन सा चमक रहा है? तेजस चैन खोल के दिखा दे ये कौन चमक सा रहा चमक रहा है, ये चमक रहा है, ये चमक रहा है। भाई ने बोला चमकने का तो चमकने का। अभी ये चमक रहा है। है। भाई ने बोला इसने कहा फिर ये इस बार नहीं हुआ। तो क्या कर लेगा? वापस तेरे को करना पड़ेगा। चैलेंज मत कर। दोबारा करेंगे। उसके अलावा तो कर भी क्या सकता। अब क्या करें? अब कहाँ मुंह पे मारे आपने? अच्छा मैं मुंह पे तेरे मारता, रुक जा। सिनुज ए तेजा चल जल्दी। बेटा तेजा है, जिंदा है। ओके अबे कमीना दम मार रहा है। भाई, आई एम सो स्मार्ट भाई। मैं कैरेक्टर उठ ही नहीं रहा है मेरा। These will come in handy. उसका ज्ञान ही उठ रहा है। कैरेक्टर अच्छा मैं वाला कुछ और नहीं उठ रहा है। इसके गाल में हाथ डाल के उठा दे, उठ जाएगा। अब भैंस की अबे सीनू फ्री फायर खेलता है रे? खेलेंगे। फ्री फायर खेलता है? अबे यार हम पर फ्री फायर की वजह से तो नहीं आ रहा। हाय फ्री फायर खेलता है तू? बंद कर दिया? मेरा कैरेक्टर तू साले बंद नहीं कर सकता, मुझे मालूम है। ग्रेविटी का ही मार दिलाने ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आराम से आ रहा है माउस का। देख छिनू, इसका भाई आ गया। देख इसका भाई आया। वो वाला मिशन आ गया जब इसका खुद का भाई आता है। देख मैं उसी मिशन पे आ गया। क्या बात कर रहा है? हाँ रुक, ये तो स्ट्रीम करना बनता है। रुक स्ट्रीम करूंगा। सीनू तू भी देख ले, जल्दी आ स्ट्रीम देख। वो वाला मिशन रिकॉर्डिंग दे दूं? ले देख ये देख इसका भाई आ गया। देख ये देख रहा है इधर। Don't get frostbite. अबे सीनू, गेम का क्या रोल है? अपन मेरे अपने डिसीजन पे गेम चलेगा, अपने स्टोरी पे गेम चलेगा? ये देख लूमिन, ये देख। हाँ दिखा इसका खुद का भाई दिख रहा है। देख कितना भाई है? हाँ नेट चलो। मैं वही मिशन पे आ गया फाइनली। देख इसका खुद का भाई मिलता है। मैं भी देखेगा। किधर डिस्कॉर्ड? A curse of it. You were saying, and you said the people turned होल्ड करके रखूं? You tried ले देख। the whole thing. Home. Yes, but I. अबे सीनू तेरे से आगे निकल गया भाई, क्या कर रहा है? Has engulfed the thrones. My war with destiny will see. Listen to. I have already. मेरे को लगा मार मुट मार रहा है। You're such a देख भाई जा रहा है। देख We'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. रुकना जरा, मैं भी देखूं। अबे तू अपने में खेल ले, We have always वरना मजा नहीं आएगा। had enough time. अरे नहीं, वो तो मैं पूरा करेंगे। गति आवाजें आ रही हैं।
ये वो बंदा चला गया। और रोना मत हाँ। हम्म। अबे वो बंदा चला गया बाकी। भाई मेरा डोमेन में तो रो मशरूम मत। मार दे। डोमेन में आके मेरा मशरूम मार दे। हाँ? जाए तेजस जाके उसका मत मार दे। गाड़ी मार देना जा। मशरूम डाल दे। ये कौन सा नया मशीन है? भाई डोमेन में मशरूम मारना है, आजा भाई मार दे। तो मत ही भूल गया। डोमेन में मशरूम मारना है सच्ची। मैं तेरे को मशरूम छोड़ के कोई और उधर जानवर ही नहीं मिलेगा, है ना? तो गोल गोल घूम के मेरे को ऐसा मार रहे ना। अबे अब अगला आया देख। भाई अगला वाला तो खतरनाक है। अगला वाला करेंगे। अगला वाला करेंगे। सोने यार अरे अब बब्बी का फोन नहीं आया आज। सो गई। किससे पूछ रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड से? वो सारे तो सिंगल है। मैं भाई अपने छोटे वाले भाई से यार, अपने छोटे वाले भाई से पता है। छे छे तो तुम दोनों की मम्मी अलग है क्या? डूमर। क्या करूँ यार। अबे तुम दोनों की मम्मी अलग है क्या बे? हाँ क्या बात कर दी? भाई मेरे खाला का लड़का ये। उसको समझ में नहीं आएगा, बुआ बोल। खाला बोलता है। अबे मेरे को समझ में आता है, समझ में आता है मेरे को। अच्छा सुना है मैंने। अब मालूम होगा कैसे अलग है। हाँ तो ऐसे बोलना कजन ब्रदर है। भाई खुश होकर पूछा था। अब बता किधर जाना है? सोचा था रोस्ट मारेगा, सोचा था रोस्ट मारेगा। पर तूने अभी भी झूठी बोला। सही बोल रहा था। झूठा सीनू बता दे यार। मक्कार तू, कमीना है तू। ये अलग ही भोसड़ी का अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं जी नहीं रहा। मर रहा है। मैं मर भी नहीं रहा। मेरे को जो बोला साला मार लगी थी। मैं इधर टेलीपोर्ट कर सकता था, फिर भी इतना घूम के आया। ये मेरे साथ भी होता क्योंकि तुम चूतिए हो। ही। तुम मेरे ऐसा नहीं। ये कौन आ रहा है? सीनू उसकी मार लिया मुट्ठी। हाँ डोमिन आ गया, डोमिन कल वाला बंदा। तेरा दोस्त आ गया। अब इसके साथ बुला ले जाके बुला ले। मारूंगा। इसके साथ जाके मारेगा। आजा बच्चन मशरूम मारने। मेरे को हाँ बुला रहा है। हिंदी में बोल। लुमिन आ गया। हाँ लुमिन आ गया। हाँ मशरूम मारेंगे इसके साथ जाके। भाई तुझे भाई पता है लुमिन एक्चुअली में कौन है? वो जिसका भाई है उसका नाम लुमिन है। भाई या तो बहन का नाम। चलो लुमिन आ गया, तेरी लुमिन आ गया। अगर वो सुन सुन वो लड़की है क्या? लड़का है रे, लड़का शायद। अबे लुमिन का जो कैरेक्टर है उसने लड़की सिलेक्ट कर रखा है कि लड़का गधे? लड़की। तो वो लुमिन है। लड़की वाले कैरेक्टर का नाम लुमिन है। अबे यार ये नहीं खेल पाएंगे इसके साथ, अकेले खेलना पड़ेगा। क्यों? क्या है ब्रो? What's the hurry? इसको पूछते ये वाला मटेरियल मेरे को कहाँ मिलेगा। कुछ इंग्लिश आती है ना, वरना रील वाली इंग्लिश करना। आई एम so because I am you are my मैं वहाँ इंग्लिश बोलता है। I want EXP वो अंकल जी बोलते ना, नहीं वो अंकल जी बोलते ना, सुनना सुनना या हाँ या वो उधर कन्हैया, कृष्ण मेरा छोटा भैया, मैं बलराम, हम रामायण। वो बोला नहीं, वो स्टेज पे या नहीं लाख वर्ष पहले मैं
राम और वो लक्ष्मण। देखा है ये वाला, मैं उसका छोटा भैया। मैं अबे ये मारते तो उसका भी हेल्थ बढ़ता है और हमारा भी हेल्थ बढ़ता है। इसने बोला ओके ओके सही है, मार फिर लो। एक दूसरे हैं? फिर एक दूसरे के मारो तो मारो, और क्या। अबे वो बंदा या बंदी है ये तो बता। मेरे को भी नहीं पूछ मालूम। के देख, पूछना अबे मैसेज में। अबे तो जाऊं कैसे बे? अब यार मैंने उसको बोला आई वांट ये मटेरियल, वो लेफ्ट करके भाग गया। क्या लेफ्ट करके? मेरा वर्ल्ड छोड़ के भाग गया। मैं उसको पूछ कर। आर यू कुत्ता कुत्ती, तू उसको काम कर, तू उसको पत्थर मार। अगर वो भौंका तो कुत्ता भागी तो कुत्ती। नहीं, वो भौंका तो कुत्ता, वो भौंकी तो कुत्ता। अरे मार ना रहे हैं। तीनू उसको मैसेज कर, तो उसको मैसेज कर और बोल ये सैमसंग का नंबर, इसमें को कॉल कर। अबे यार कितना अच्छा है भाई, ये अपने वर्ल्ड में बुला रहा भाई। मैं आ रहा भाई, मैं आ रहा। तेज मिलने नहीं, मौका नहीं मिलेगा। अगर उसमें ऐसा रहता ना तीनू, इसमें अपना घर बना सकते थे। हाँ बना सकते हाँ हैं, भाई साहब, बना सकते हैं। है है। है बनाने बना का सकते, है। हम्म। है। क्या बता अपना मैं घर बना। मेरा खुला है, वो मेरा खुला है, बाकी मैंने अभी तक बनाया नहीं है। सीनू तो तो मालूम, बनाया। सुन 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 मेरी बात सुन। मैंने अगर खुद का घर बनाया है, ठीक है, तो ये लोग मेरे घर हाँ में विजिट भी कर सकते हैं अगर मैं ऑफलाइन रहूं तब। हाँ मैं लुमिन के साथ आ हाँ। गया। तू बांध मारा। मैं लुमिन के वर्ल्ड में आ गया। अब तेजल भी लग रहा है उसको जवान पे कोई डाल दिया कर रहा है। मुझे तो पता था पहले से, इसलिए कुछ नहीं बोला। भाई को मजे लेने दो। सीनू और फिर से करना है। तो करेगा। हाँ इस बार पूरा दे दूंगा, आवाज भी नहीं निकलेगा। पता है एक दिन, पता है जैसे मैंने एक दिन फैजल को कॉल किया था, फैजल कॉल उठाया और उसका आवाज़ नहीं आ रहा था कुछ, तो थोड़ी देर बाद ऐसी आवाज़ आ रही। फिर मैंने क्या फोन बोल क्या बोल फिर मैंने फोन काट दिया भाई। तू लाइव स्ट्रीम कर रहा है ना? अच्छा सॉरी। तुम्हारी मैं सच में भूल गया था। Incinerate! कहाँ है? तो राम राम भाई सारा ने आज आज सारी जरूरी फैसले की अम्मा बहन एक करने के बाद जाना कहाँ है? मैं को नहीं मिला। हेलो, कैसा उसका एंट्री कैसा है? हेलो भाई साढ़े आने, आज है मेरा उधारी वापस मांगने का चौथा दिन। अगर कैरी में आती तो मस्त था। अबे कैरी मिनाटी का सबसे बढ़िया वाला तो मुझे वो सौरभ जोशी का लगा था। मेरा उसका फैल्ट करते हो सौरभ पार्ट पार्ट मेरा सबसे नहीं, कभी करके देखा है क्या मजा है। मेरे को सबसे अच्छा उसका जो इंटरव्यू रहता ना। अबे बाकी उसने क्या सेटअप किया था। अब उसने पूरे डिट्टो सौरभ जोशी का घर बनाया था, डिट्टो। अब उसका सेटअप वो दाढ़ बोलता है, अरे कौन निकालो भोसड़ी वाले को, सेंटेंस नहीं बोलने दे रहा। संदीप माहेश्वरी। हाँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ सोचना चाहता हूँ, निकालो इस मादर चोत को। ऐसा मुझे देख। भाई मैं अभी पैसे देख रहा हूँ और कुछ नहीं। रुक जा स्ट्रीम देख रहा हूँ। नाले तुम लोग अलग अलग साथ में खेलो यार। ये मुझे बुलाता ही कहाँ है? मैं तुझे कैसे बुलाऊं? तू मेरे को बुलाएगा, तू बुलाएगा ना कुत्ते, तू भेजेगा ना रिक्वेस्ट। फ्री फायर चल रहा है, लाइव स्ट्रीम करे तो साथ में खेलो ना, एक जैसे मैं तेरे में कैसे हूँ? मेरा वर्ल्ड लेवल 2 है। वर्ल्ड लेवल भी होता है। तेरा प्रॉब्लम। मैं इसके भूल गया है कुत्ता।
ये भेज ही नहीं रहा, कब से और भेजेगा, तो तब तक एक्सेप्ट करेगा। मैं इसको कैसे भेजूँ? Without internet, life is stop. सीनू, जन्नत में मोबाइल इंटरनेट रहेगा? हाँ। उधर भी बीजीएमआई पबजी खेलेंगे। बहुत ठीक है, पहले जाने का लाले पड़े हुए। कोई ना, कहीं भी जाएंगे। मस्त वो वाला था, दारू पीने वाले कहाँ जाएगा जहन्नम में, हाँ, दारू बेचने वाला फिर कहाँ वो जाएगा जान जहन्नम में, वो बार डांसर वाली लड़की कहाँ जाएगी, जहन्नम में जाएगी। वो बार वाला कहाँ जाएगा, वो भी जहन्नम में जाएगा। तो मैं जन्नत में जाके फिर वो क्या करूँगा? बोलता है बोलता है सीनू तेरे को पता है, सुन सुन सुन, सीनू सुन, अच्छा मुझे एक चीज था, ये अपना नाम ट्रैवलर बोलती है, ठीक है, ये अपना रियल नेम नहीं बोलती जो अपन ने रखा है, ऐसे तेरा सीनू बोलना चाहिए मेरा भाई। सोच अगर किसी ने घोड़ू रखा हो तो हैं? उसको कैसे बुलाएंगे? बस मैं इसमें वो कुछ भी नाम रख, ट्रैवलर ही बुलाते हैं। किसमें? कौन ट्रैवलर कौन बोलता है? कोई भी हमारे कैरेक्टर से कोई भी बात करता है ना तो ट्रैवलर ही बोलता है। अच्छा, हेलो ट्रैवलर्स। समझ लो तो एक जर्नी पे निकला हुआ है ना ब्रो, समझ, तेरे को ट्रैवलर ही बोलेंगे ना। वही तो गेम की स्टोरी समझो जरा तुम लोग। कैन डू जनरेशन गेम टू जनरेशन। मैं वही एक्सपी मटेरियल शॉप से खरीद सकता हूँ। हमें मोदी जी कहना क्या चाहते थे, लेकिन ये गेम टू जनरेशन का मतलब हमें कैन डू जनरेशन मतलब क्या हुआ? कैन डू नॉट कैन डू। बाकी और इटली की नेता का नाम क्या है? किसका? मैं अपनी मिलोनी मेलोडी। मिलोनी है रे, माइलोडी नहीं है। अच्छा, सीनू सीनू अपना बता रहा है कि सीनू वो है। देख, 14 फरवरी को मोदी जी के ऊपर नजर रखना, इटली जाए तो समझ जाना। क्यों 14? अच्छा, इटली जाए तो समझ जाना, ठीक है ना? अबे तुम उस पे नजर रखो, मैं तो मेलोनी पे नजर रखूंगा। मुझे इतना विश्वास है मोदी जी नहीं जाएंगे, वो खुद आएगी। मैं एक स्टोरी लगाया था, देखा था सुनो, मोदी जी मेलोनी का। नहीं अबे नहीं देखा था? मोदी जी मेलोनी का, मेलोनी बोलती मोदी जी मेरा दोस्त है। अबे स्क्रीनशॉट लगाया था मैं। अच्छा, हाँ भूल गया। क्या कुछ करने की जगह में क्या टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता है। मजा आ जाता है। कैन डू जनरेशन। अबे जीनू, तेरे गेम खेल रहे हैं ना, उसको ही बोल डिस्कॉर्ड पे आ जाना, ज्वाइन करके वो इंग्लिश में बकचोदी करेगा, अपन हिंदी में उसकी लेंगे। तो पहले पोर्टुगीज तो बोलना सीख ले। पोर्तुगाल वो पुर्तगाल है, वो से ठीक है, पुर्तगाल है, मुझे भी आता है बोलने। हाँ ठीक है, तुम थैनोस पे ऐड करो, हम चले वापस किरमादा बनने। किरमादा अब मैं रोनाल्डो का एडिट करता हूँ मैं।
तू तो वो एडिट कर, एनिमी के सारे विलन एक तरफ, किरमादा एक तरफ, एडिट कर इसको। वायरल ब्रो, कसम से बोल रहा हूँ वायरल जाएगी। वो देख रहा हूँ ड्रेसअप माय डार्लिंग, बहुत आरामी है भाई बंदा। अबे हाँ, मैंने माय ड्रेसअप डार्लिंग लिखा हुआ है, कसम से पीछे का पूरा पसंद दिखाता है उसमें। वह पूरा दिखाता है। अबे हाँ, और तू 11वां एपिसोड देखना, वो जो बेड वाला रहता है। मैंने पूरा अबे वो देखो। क्या हाइट मस्त रहता है भाई। ड्रेस बनाती रहती है भाई वो। नहीं, तूने लगता 11वां एपिसोड नहीं देखा, आखिरी का पहला वाला। मैं अभी तक शुरुआत शुरू कर रहा हूँ। तूने अभी शुरू ही किया, आखिरी का सेकंड वाला देखना मजा आएगा भाई। कब से तैयार मैं देख नहीं रहा, अभी तो एनजी रोल का प्रीमियम निकाला ऑनलाइन देख। मुझे एक चीज बता, लव होटल में शीनू, जाते हैं उसको मार अबे शीनू, अरे वो सब छोड़, मुझे एक चीज बता, तेरी अभी तक मेंबरशिप खत्म क्यों नहीं हुई? पता नहीं क्या पता अनलिमिटेड वाला मार नहीं। अरे देखो मतलब खत्म हो जाएगा तो मैं And हूँ after प्रीमियम दूंगा। Abyssal. मैं क्या? प्रीमियम यूज, I am sorry, but मैं मोड यूज करता हूँ प्रीमियम, उसमें किसी और का अकाउंट मेरे को मिल जाता है, फिर लॉगिन क्या हुआ। भाई मेरे को भी बताना, ठीक है? मैं भेज दूंगा ना देखो। जब तक शीनू का ज्यादा चलाएंगे। ये साला 99 का मारा था, कितने का मारा था? मैं 1 रुपए का मारा था ये। सही में? 1 रुपए का था। क्या बात कर दी? हाँ पूछ लो इससे। क्यों आराम को, कैसे ये कैसे हुआ? मेरे को भी नहीं पता। इसको 1 रुपया आगे काटा था अकाउंट से। फ्री ट्रायल दिया था 14 दिन के लिए, पता नहीं अभी तक इसका 14 दिन पूरा क्यों नहीं। ओ शायद ग्लिच हो गया है भाई, और ये ग्लिच कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बात करेंगे तो हिंदी में बनेगा भी नहीं, बोल रहा कि लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, अच्छा बता दिया, वो आज वो वाला एनीमे भी खत्म ही हो गया, उसका फाइनल एपिसोड आ गया हिंदी में, वो माय लव यामादा। माय लव यामादा। अब एक और एनिमे है उसका 99 लेवल करके कुछ नाम है। अबे वही है वो 99 लेवल, वही है 9 लेवल, वही है वो। पता नहीं मैं अच्छा है वो। मैं भी देख रहा वो वाला। मेरा अच्छा खत्म है, हो गया वो आज। एक्शन है क्या, रोमांस है? नहीं रोमांस। रोमांस है। वो मैं मेरा मतलब हिंदी में देख रहे थे तो इंग्लिश में चलने लगा तो बंद कर It's दिया। been getting quite. अभी सारा हिंदी में हो गया। तू बोला होगा इसकी माँ का ये क्या हो गया। अरे सब एकदम शांत, मैं तो फूफू करता तो मीम ते शांत हो जाते, कुछ मीम उम का याद करो। भाई भाई हाँ बैगन ले याद कर लिया। शायद इतना ही आता और कुछ नहीं। अबे अबे एक बीके मार- मार दूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा मैं। किसको धमकी दे रहा है मैं? हाँ, अरे ये बंदा कितनी स्टोरी सुनाता है, जान ले लेना चाहिए इसकी। बोल ले जहाँ पे झुक जा बोल ले, बोल रही है गान मार लो स्टोरी। ये लोग स्टोरी नहीं सुनाते, मजाक करते हैं हमारी फीलिंग्स का। बहुत लंबा बकचोदी करते हैं, स्टोरी बेस्ड गेम में यही होता है। That's a nice haul. It's been getting quite अबे busy. कमीना, तो जिंदा है। ये जिंदा है। अबे हेलो हेलो सीनू आया क्या वो? 15, 16. Recommendation That's a nice haul. सीनू
बकचोदी गया, मूतने गया वो का। बेटा इसके बाद पॉकेमॉन यूनाइट खेलेंगे, देख लेना। तू रखा है अब तक पोकेमॉन? हाँ? अभी तक तू रखा ही है? डिलीट कर दिया गधे। डाउनलोड करने में कितना चल टाइम कोई। लगेगा? 5G है बे। हाँ डाउन। That's a nice haul. हाँ मेरे पास भी वाईफाई है। जिस दिन 5G बंद हुआ उस दिन मेरा लास्ट दिन होगा, फिर जिंदगी में नहीं खेल पाऊंगा मैं। क्यों? वाईफाई नहीं रहेगा ना, अनलिमिटेड। ना कितने का आता ही है भाई? किराए के मकान में लगवाऊंगा। नहीं, किराए के मकान में मैं वाईफाई लगवाऊं। और तो क्या हो गया भाई, किराए के मकान में कौन सा, क्या रोज रोज थोड़ी खाली करना पड़ता है? पर अभी खाली करने का चल रहा है। अच्छा, अगर टाइम मिले तो लगा लेना खाली करने का, अगर कुछ ना रहे तो। और 5G इतनी जल्दी बंद? तू बता किराया कितना होगा हमारा? 6 to 7,000। रूम कौन सा है? कम नीचे का है, ऊपर का है? और बड़ा। भाई पहले ये तो बता, रूम का आएगा पहले से सबसे नीचे या फिर पहला माला दूसरा माला कौन सा है बता? दूसरा। दूसरा? एंड फिर आज बात खाओगे? 7 to 8,000 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलता यहाँ। और तेरे भाई से ज्यादा तुझे पता है मुंबई में कितना में दूसरे माले का? 5 से 6 हजार रुपया बस। हाँ बस। और रूम के ऊपर, अगर कुछ हाई फाई रहे तो फिर महंगा रहेगा। तू भी किराया कितना है बता? अबे कारखाने की बात हो रहा है जहाँ काम होता है। Oh, तेरा कितना है? it is with such an air of urgency that you appear before us. अबे कितना बढ़ा तू ही बता दे कितना है? 11। 11,000 क्या बात करता है? 11 माइनस 7। महल में रह रहा है क्या? 11 माइनस 7। आए 4,000। अब सही बोला, अब सही बोला। बिजली बिल सही। चूतिया तो बोलता है 11,000 और इतना भाड़ा कहीं होता ही नहीं। तो क्या बिल्डिंग में रह रहा है क्या? One bears no secret. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you... अले तेरा अपना चुप हो जा तू। You may want to hold your tongue. सच में चुप हो गया? मैं रेंट पे रहता। रेंट पे नहीं रहता तू, तेरा अपना है रे। सच्ची तेरा अपना है ना? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for तू a भी रेंट visit. पे? The two... Looks like you did your तो research. पटना में है तो But in our तेरा भी होगा experience, 5 से the harder you 6 try to और lead कुछ us नहीं, on, इससे the ज्यादा more तो नहीं होगा। likely it is that we'll go straight to the Lilith and have you Preposterous. Utterly preposterous. right. Tell us something that only an Adeptus would know, and it better not be some kind of. You may recall that in fact, the seeds are one of Streetward Rambler's cult. The plant neither wilts nor withers, and thus one had no... On your way, you तू रेंट पे रहता है सीनू? झूठ बोल रहा है साले, खुद का लैपटॉप ले लिया बोल रहा रेंट पे रहता है। अरे झूठ बोल रहा है भाई, मुझे ही मालूम है वो झूठ बोल रहा है। How did you come into possession of such knowledge? अरे झूठे। The young वैसे lass, तूने इसका Yao लैपटॉप Yao. कितने का दिलाया था? Alas, one can only... 60,000 है कुछ। But for being. तूने ही दिलाया था ना? You indeed. अरे I'm नहीं, still curious about. अमित को I फोन can किया था। understand why Mountain Shaper is here, but why did you? It is but an inevitable eventuality. आज भी Long अमित have को the फोन किया था mountains ना? remained strangely idle since cloud retainers moved to Liyue Harbor. हाँ अमित मेरे को फोन किया था ना, तू मेरे को बोले थे वो। हम उनको बोले तो वो बोले कि यहाँ पे कोई स्टोर है एक, उतने में मतलब 60 या 30,000 में एप्पल का With Lantern right near at hand, Cloud Retainer is hard. one must never rest idle in the fate. But a moment ago,
So, Perhaps there are aspects of इंदौर में travel आ that one surmises मैं the तुझे truth. However, एप्पल if के you do लैपटॉप happen, मात्र 15,000 में दिला दूंगा। 15,000। Thank you for your kind words. आईपैड We shall now हाँ वो depart. तो मैकबुक दिलाऊंगा कहते मैकबुक। we got all worked सच out. में 13 दिलाया बोले। It's still pretty मम्मी का 13 कितने में दिला देगा? मम्मी का competition. और सुन The 15,000 में bigger 30,000 में कर ले 2 दिला दूंगा 30,000 में। यहाँ पे भी 13 कितने में दिला देगा? सुनना सुन यहाँ पे पूरा सिल्वर मॉल का नाम सुना? Welcome. Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? तू नेट पे सर्च कर लेना सिल्वर मॉल। भाई पूरा कंप्यूटर मिलते हैं। वहाँ से कहने 13 कितने मिल जाएगा? This jade chamber design is our कौन सा? newest. It's been selling like crazy 13 over the कितने past मिल 2 जाएगा? days. Does it also have a 13 unique क्या meaning? 13? अबे इसकी माँ का। Of course. सीनू The बता jade यार chamber इसको। symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches कौन in सी the बात- future to those कौन who सी fly बात कर it. रहा हूँ? Oh, now that's Paimon's kind of kite. I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss फोन Genuine? का तो नहीं पता मुझे। Oh, yes, पर yes, जहाँ they're तो मुझे just पता over है there. 30,000 में तो मिल Paper, ही जाएगा। bamboo, and dyes. हाँ, वो यहाँ पे All the इतना में आ necessary जाता kite making materials. Wonderful. I'll pack. Elon Wharf? तेरे इधर क्या खुला है? If the कैची two भाई of you स्टोर are खुला है interested क्या? in going to... Is Gami? Yes. एक आईफोन The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has, if you were willing to help out... टेंशन मत लो You seem सीनू। really pressed for कुछ time. दिन बाद ऐसा दिन आएगा ना अपन Now, at this पान time दुकान of से day, सिगरेट लेंगे ना तो running अल्ट्रा should मच be गिफ्ट में somewhere in the मिलेगा। vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wusho dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. वो लाता है भाई बता दो अमीर हो या गरीब। हाँ समझ गया भाई। हाथ में छोटा शीशा फोन की फोटो खींचता 13 फोन से। Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? बहुत हार्ड है You भाई extend the वो। invitation. हाथ में छोटा शीशा लिए रहता है साइड में मोबाइल से You're फोटो always खींचता the है। one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just... That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect. Gaming is here. क्या नाम है? Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some. Oh, must have been इंग्लिश Longjaw. कमजोर है इसका Looks like सीन। I've got work. तेरा Gotta इसका go. इंस्टाग्राम वाला Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. भाई जी से मतलब नहीं पड़ता Alrighty, देख पीछे you can वाले have the वर्ड goods को ना over आगे के कौन सा वर्ड है उस हिसाब से पढ़ा जाता है। Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite making materials. Plus, we didn't have to सही walk बोला very ना bro। far. Kite making materials. I see, I see. तेज जिंदा है कुछ I'm बोल glad it wasn't too much trouble, Paimon. And you must... Oh, and please excuse Longjo if... He's a good guy. He's just been super busy lately. So, you here for later? तुझे पता सीनू में Perfect. स्कूल नहीं गया। We'll go to... I'm good with पढ़ा ही नहीं अभी directions. तक। Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can मैं stop and grab a bite कहीं when भी it's नहीं time. गया मैं कहीं भी नहीं। The ingredients are fresh, the portions are generous. Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new मैं मदरसा मैं कहीं पढ़ा ही नहीं हूँ जो कोई पता नहीं कैसे Don't आया worry, मुझे I बस यही आता है understand. जो आता है। I joke around like that with my friends too. अगर तो It just shows how अरे good हाँ you are. तुम लोगों का एक अलग सा वो स्कूल होता है ना क्या You need to बोलते pack हैं anything up before we hit the road? Our things are उधर always क्या पढ़ाया packed. जाता है? मदरसा पढ़ा था भूल गया। Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard after all. हमजा को लेकर घूमते फिर। सर तुम में से कौन बन रहा है? बचपन में डाल दिया जाता है मतलब 6 साल की उम्र में या 5-7 साल की उम्र में। हाँ अब हमारा बहुत ज़्यादा कोई पड़ेगा।
आए उठा पटक मारते मौलाना साहब भाई कुर्ता पजामा। पता पता है तुझे, सिग्नेचर करवाया जाता है पेरेंट्स से और तुझसे भी कि अगर पढ़ाई के बीच में अगर कुछ हुआ बच्चे को तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने देखा है, चूतर फुला देता मार मार के। मेरा एक है दोस्त वो जाता है, वो बताया था कि पता है वो जंजीर होती है ना, जंजीर उधर कोने में रखी रहती, उसमें बांध देते, बांध के मारते, बोलता भागे ना। हाँ पढ़ाई में कोई माफी नहीं है, पढ़ाई में कोई माफी नहीं है। क्योंकि वो हमारा होली बुक है कुरान शरीफ, उसको याद करवाता है पूरा बुक को, मुझे बानी याद हो जाती। हाँ हो जाता है, मारता है पर लेकिन पढ़ लेते तो फिर पूरा ऐसे याद आ जाता है, सारा पेज का रहता पूरा ऐसे याद हो जाता है। One step at a time. Hang in there. Wait, get behind me. Another test. I'll handle this. नहीं ना, उस दिन तक मदरसा पढ़ा था, ठीक है ना, वो मदरसा पढ़ा, मुझे वो सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता। मैं कभी स्कूल नहीं गया लेकिन मुझे इंग्लिश आती है। इसे एक सेमेस्टर का कमाल। ब्रो संगत का असर ब्रो। कैरेक्टर की बात भी नहीं हो रही। Another test subject. Get across. निकाल लिया। मार मुक्का इसकी माँ का पूरा बटन एक से दबा दे। Many happy returns. आईपैड लैपटॉप के ट्रैकर से खेलना पड़ेगा, आता है ना साइड में इंग्लिश आने वाला, उससे खेलना पड़ेगा। Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. चीनू तो अभी क्या देख रहा है, कुछ है देखने को? You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. कुछ Have you है ever heard of देखने को, Wushu dancing? सीरीज कुछ? लाइव पे बताओ, कोई मूवी बताओ, देखते हैं एक साथ तीनों डाउनलोड करके। मूवी नहीं है, एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे आया कोरियन, किलर पैराडॉक्स करके कुछ नाम है, पूरा ऐसे कुछ नाम है, कल परसों आया है। To spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue नेटफ्लिक्स offer. वाले का सीरीज कभी देखा है, था बवाल I'm निकालता also है। well aware that people in Liyue Harbor और कोरियन का माल हो jumping at the chance to watch Wushu तो और बवाल है। so it's not something I do full time. Huh? You have two jobs? How do you have the energy to do उसकी all बात ही that? नहीं हो रही ना, वो अलग है। It's not that tiring. You just have to take a rest. Paimon gets it, so you must sleep a लेकिन lot. तब से Not really. Just yesterday I stayed up all night playing cards. Oh, हाले पास में रहता तो पूछता नहीं, दूर है Let's नहीं go. खा सकते तो The docks पूछता are है। just up ahead. चल जोमेटो से ऑर्डर कर दे रहा, पेमेंट कर देना। बहुत तेज है। मैंने पता जोमेटो स्विगी दोनों डाउनलोड करके रखा, सोचा था कि वो ऐसा मैसेज आता है सच में क्या चेक करने के लिए, नहीं आता है। नहीं आता, वो बनाती रहता है। ऐसे जो उन लोग थोड़ी मैसेज कर सकते हैं, उतना टाइम नहीं है। फ्री फायर में पता है आया था मैसेज ऐसा, वो उधर लिखा था finally we can rest. हाँ Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. ये क्या बोलने Leo का is तरीका just कैजुअल है ये too वाला। hilly. Floating up. Aw. Would you like some winter melon cake? बोलने का तरीका I have some. अभी थोड़ा Paimon, take up. You might want to बैठने pace का yourself तरीका there. कैजुअल है। You'll be too full to eat a proper meal later. और पता है वो लंगड़ी रहती है भाई, वो भी शेर पे आती है। Oh, just like you. सही बोल रहे Apparently never get tired.
उसको एंट्री अच्छी है पर बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. Ah, I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. फैजल देख स्ट्रीम देख मेरी. Paimon thought she was देख मैं going क्या to देख रहा starve to death for a minute there. वेट क्या देख रहा तू? That close of a call, huh? I've been eating wintermelon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. All my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Paimon is kind of enjoying listening to your chitter-chatter. Aww, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood anytime she wants. Need some fresh bamboo for this. मुझे लग रहा है राइडन कैरेक्टर खोल दिया. Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. देखा क्या सीन चालू था उसका एकदम बवाल. यार टक आवाज कहाँ से आ रहा है? ऊपर से थोड़ा गिरा भाई, तो सारा अबे मेरा 31 लेवल हो गया. लेवल पे लेवल बना दिया आज. हाँ भाई कुछ याद आया सीनू. Hey! Hey, slow down. I'm begging you. No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? ये वाला देखा जीनू. हाँ इसे ले लो. Oh, well, how should I put क्या it? आवाज निकालती है बंदी. Come on, spit it out. नहीं सबसे बेस्ट यहाँ पर तेजस निकालता. Do you see that group of people over there? तेजस जरूर एक बार. Those are my अरे वो relatives. तो वॉइस चेंजर लगाना पड़ेगा. You sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. Oh, This is bad. Baby, They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? मजे आ गया तो. Unless... अलग ही फील आ गई. Oh, did you do something horrible to them? No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. सीधा उधर लिखा $20.
I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. हर जगह कहीं भी चेंज हो जाएगा डिस्कॉर्ड के लिए कोई भी गेम खोलो उसके लिए कहीं भी 1600 रुपया मतलब The left side looks pretty packed. Let's go straight. मंथली 1600 ना Slow and steady wins the race. पर मंथ वन टाइम रहता तो कुछ बात भी Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. Bombs away! She's gone. Let's go. Turn left! Run! Only with solid practical training. To the right and... Wow, you guys are good! I'm impressed. That was nothing. It was a piece of cake. You really liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you can swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. तो क्या हो गया कोई जा रहा है Hey, क्या? Uncle Jirgwe. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes. Thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgwe. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon likes? How long have you two known Gaming? Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends. You know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else. And Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jirgwe? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Rite. Oh, by the way, here, have some tea. All right, then. Deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. Alright, then I'm off. See you in 2 days.
Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise our services, right? Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking, but if you're going to get us something, she'd much rather have wintermelon cake instead. Seems like Gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. अब तुम सब मर गए क्या? हेलो देख तुम्हारी आत्मा भी निकल गई. What are you doing here? मेरे वर्ल्ड में कोई आना चाहता. The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us, or Tia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Tianyin? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those 2 old fossils? One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. बाबू सोना कर रहा है कौन? Huh? Wait, here? You really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. Hey, not you too, Traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Just
soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special Lantern Rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. स्ट्रीम कर रहे हैं 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Ping too. Discord पे Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. 10 boxes. Seems rather excessive. But if one factors in the conqueror of demons and one's disciples... 10, a nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. That is agreeable. One will... I will have these boxed up then. Of course, right away. कौन तेजस I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. ग्राफिक इतना बवाल है Perhaps some of my wares might also be of interest to you. ऑटो प्ले है इसमें I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without, thank you. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less, it would only invite scandal. There is no harm in bringing it back to study in secret. मेरे चोरनी इसको चोरनी बना दिया Oh, Xianyun, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. देखो सुनी है तो जिंदा है And you too? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It गर्लफ्रेंड doesn't से look बात like कर there रहा are any लग रहा kite stalls around Elong Wharf. But it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition then? One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xianyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day.
You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia, of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness... So, will you be... Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire All right then. No need to prepare. Arrive at Mount Al... Are you leaving? Don't you want to go... It can float? What kind of invention is that? One calls it the floating toting device. Floating toting device. Okay. Huh. Order karta kali Amazon She se. seems pretty Look at her walk down the street. She seems so confident. But everyone around her is looking at her all funny. मिंत्रा का मेरे को डिस्काउंट कूपन कोड मिला है 500 का सामान लेंगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट है But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything. She just, got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. All Paimon's saying is that Shenyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machine? Totally. We should, after all, that it... चलो मेरी मूवी खत्म हो गई और माउस को संभाल यार और ठंडी खत्म हुआ तुम लोग इधर मेरे इधर भी तू साला हमारे मुंबई में आगे से यही पंखा चालू कर चला गया ये साला क्या बोलता है थक जाता है वो गेम खेल रहा है मैं उसको देख कर इसका स्ट्रीम ऑन था ना उसका वही साला फुसुर फुसुर कर रहा था एक सेकंड में को जो 3 मिला है पहले तीनों को जो है मई लेवल अप 34 हो गया तेजस तेरी काया पलट कर देंगे हाँ क्या नाम है इसका काया का अटैक कितना है तेरा और डिफेंस कितना है तू सोच भी नहीं सकता तू बता दे इसलिए तो पूछ रही इसीलिए रैपट मारेंगे ना सीधा मुंह बताना नहीं रहता लौड़ा का चमाटा मुंह को मारेगा छप जाएगा क्या बोला अब वीडियो है ना ऐसा लौड़ा का चमाटा मुंह पे मारूंगा छप जाएगा हाँ सही बोला ये फिर जिंदगी भर लेके घूमेगा अच्छा ये परचेस भी होता है क्या जैसे अरे 0 है क्रिस्टल टॉप अप भाई साहब 99 में 60 क्या बात कर इतना महंगा और फिर ये भी है मेंबरशिप टैब का परचेस कितने का है ये 1680 400 महीने का नहीं 1600 अच्छा इतने मिलेंगे परचेस क्या करना पड़ेगा ये खरीदना पड़ेगा इसके लिए जेम्स खरीदना पड़ेगा जेम्स के लिए भी पैसे ये माँ का मैं तो नहीं दे रहा
महंगा अच्छा महंगा साला सामान बेचता है। कैरेक्टर का आउटफिट है, जब मेरे पास वो कैरेक्टर ही नहीं है तो आउटफिट लेके क्या करेगा मैं? बेच दे बेच दे। कहाँ मीरा बाजार में? चांदनी चौक पे जाके बेच दे। 12 बजाने क्या ऐसे बोलो ना, 12 बजाने। ये लो भाई 12 बजा दिया, ये लो। यहाँ पे घड़ी भी मेरे हाथ में है। कैसा कैसा मिशन देता है 12 बजा रहा। अबे यार बच्चा, 12 12 12 12, हाँ ये हो गया 12, ये हो गया शाम, ये हो गई रात, और ये हो गई आधी रात। आई अबे सॉरी, सुबह का सुबह का 12 बजे। साले AM PM भी होता है। सुबह का 12 बजा दिए। सुबह का 12 बजा दिया भाई, मेरे को रात का 12 क्या बजाना बात। था। एक मिनट, फिर से रात किधर है? इधर है, नाइट। ये रहा 00। अबे तेरी, हाँ कंफर्म। रात हो गया। हाँ 2 days later, 8 or 12. Wait until the appointment time 2 days later. ये ले भाई, 1 दिन, ये 2 दिन। घूमता रहे भाई, घूमता रहे। सुबह दिन रात सब आज ही हो जाएगा, देख तू। ये 1 दिन हो गया, और मेरे को लगा मैंने गलती कर दी। मैंने एक बार घुमा दिया था, मेरे को सिर्फ एक बार ही घुमाना चाहिए था। मैंने 3 दिन आगे कर दिया। अब हो गया? अभी भी नहीं हुआ। वेट अंटिल द अपॉइंटमेंट टाइम 8 क्या 8 AM क्या कुछ भी बजा। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हो गया क्या? I've never had dim sum at Shinue Kiosk before, but it should be quite the feast for sure. Ooh, and that's Paimon's stomach right on cue telling her it's time to go find Gamin. Let's go! कितना चाय चाय करती है। मुंह बंद कर दे। जाना है 3, पर मैं यहीं पे तो था पहले भी। अच्छा नहीं, जिंगल बेल जिंगल बेल। क्या है ये? इंटर। चलो फिर, मैंने इंटर की जगह F दबाया, क्या कर लोगे बताओ? फिर भी मैं इंटर हो गया। Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. काय का सीट? Here, hand me your cups. अरे वाह, चाय दे रहा है, मेरे को भी पीना। Oh, thank you. चुप तेरी, काय का थैंक यू।
Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. चाय That was for you to rinse your utensils. चाय को पता पानी की तरफ पी गई है. That's a... गरम नहीं होगा. Wow, so much delicious food. Do you really eat? That's just most of the time, though. I don't Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to... eat. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood kanchi? Let me refill your bowl. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. भाई सारा खाना लेके इसके मुंह में ठूस दे. इतना पक करती है. मेरे को चाहिए नहीं, मेरे हिस्से का भी खाना ठूस दे इसके मुंह में. So full. That meal was so satisfying. It even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small-scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... He always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. Hello? One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh?
I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh? Are you interested in kite-making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an Adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier! अबे बाहर जाने का रास्ता किधर से था? हाय, मैं किधर से आया था भाई इधर? Welcome. अरे तेरे से तो दरवाजा किधर है रे? इधर से बाहर। अच्छा ये तो रहा दरवाजा। दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजा किधर? कहाँ जाना है अब? वापस से यहीं पे आना, नहीं दूसरा जगह। Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hello, friends. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from... Apologies in advance. Wait! Shenhe? Not there! See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night?
That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without... I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. Yao Yao? It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Xian Yun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too! I want to participate in the kite flying competition with my best friend! Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xian Yun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always leads with the smartest, coolest, and prettiest adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? Oh, my So delicious. Paimon's life is complete! It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Paimon knew she could count on you, traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any... फिर से बात करने का चेक आमिर से बात करना Hey, Gaming! Want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the die. You're that No, it's not that. What do you think, Shuyu? Is there a particular... I want to... True, but... Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good.
Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil. Oh, no need. Perhaps... Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. ठीक है तो याओ से बात Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. We actually haven't started yet, but we're going to start, right now. We should get started on our kite now. Let's go. अबे हमें भी बनाना पड़ेगा क्या बनाएं हम First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Oh, that's not a completely crazy idea. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. पतंग बनाना पतंग चल मेरे को तो नहीं बनाना पड़ा इसने खुद ही बना दिया चल सही है पाइमन को बनाया देखना Now, what expression should we... Ooh, like this? Ooh. The title of Champion Kite Flyer is mine! Now that we've decided, let's make it happen! It's done! Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Shenyun's calling us! Let one take a look. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow! It's so pretty. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white.
Oh! Well, now that you mention it, Paimon can see it too! Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, Traveler? Its self-important countenance bears a striking resemblance to that of its namesake. It makes her look like she's already won the competition. Well, that's gonna happen one way or another. Is that the Jade Chamber? Oh? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery! One simply must know who it is that possesses such impertinence. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer! Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. There's wind up ahead! Looks like we can glide over! को इसके अंदर ही जाना है। It's right there! This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has... Calm yourself. One believes it drift. Perhaps it is mere habit. Your concern, Cloud Retainer, is on the subject. Still thy tongue. One presumes that... Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault? One seems to recall that releasing the kite was Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something. Further explanation shall only... We can hardly... Go retreat. Absolutely. That is not... Oh. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Xianyan. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? You! Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was... Then you aren't... How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is... We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity, however. We are... Your prowess...
One has guests to Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked... Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant... If Gao Ming... Well... Just like some people can eat spicy food. Exactly. That's why tolerance... Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are It's been so long. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. How do we look? Huh? She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined! Those outfits really suit you both! Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black.
And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Seems like your supreme cuisine machine is this golden crab's It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well, one will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh. What? Where do we even begin? One has only heard... He ran... Oh? Ran away. Oh. What? This shall not do. Lantern Right as one was contacting he possessed us at a gathering of it. However, and later... one means to say that Lantern Right should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea! How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. मैंने हर जगह का स्क्रीनशॉट ले लिया। स्पेशली थे किसका चाहिए व्हाट्सएप पे, हर एंगल में स्क्रीनशॉट लिया। कुछ कंप्लीट हो गया।
फैजल देखा हाँ देखा It's time to carry out the plan! Let's go find Gaming! Hope everything goes well. Hi, Gaming! Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect, you're all here. There's an important commission I need your help with. Alright, I've got the time. Where are the goods? Well, it's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very... Sure. What's... Here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon... Alright, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. आज एक lyrics edit करके डालना है। Game बंद करके You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Dad? Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go.
We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Imp? This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Indeed. Bring them forth readily and without protest. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away! Let us away! Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Gaming, if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. All is going to plan. Okay, we should be good to stop here. Youngli? Oh no, what is he doing here? Good sir, please, listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Bandits? Acting in broad daylight? Oh. Ah, I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just, had some cake stuck in her throat. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news?
That would be lovely. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. Usho dancing has become, if you ask me, what truly deserves I have heard many of... Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. He's a hard worker. You should be sure to tell him Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. No. It wouldn't be right. I've been in the over the past few years. I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. When you're young, every time, I often regret It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. You seem... Rather than fretting about their future. Then she's more... I meant to... Sure. So, do you... That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you... Children grow up in... Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. I'll come right out and say it. Those 2 bandits, you sent them, didn't you? So, that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but... At first, their manner... I was right on their tail, and it should have taken people with that level of... Unless, of... Wow! I just have a lot of experience. In the end, I told... Yeah. I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? I appreciate it, I really... But in this conflict, even if those 2... You've seen the way he talks. It's not like Zhongli was talking... You don't believe... He won't let it go. He can say as much as he wants to other people. You told us you wanted to prove yourself to your... Will that even do it? You won't know him. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone?
Ipdak and I have found many... Well said. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. Huh? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, alright? Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? A friend, Hello. Xiao! You're here too? I've been here the whole time. A ghostly kite. Could that elusive Director Hu be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. It's you! I thought you were Director Hu. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to... The addition of the power source make... He seems quite... I fear it's... In truth, I'm here because Director... I see. Am I wrong? While we're on this... I've only met... This one here is... Many hands make... Alright. I have made... If speed is what you're... Wonderful. I'll leave these two... Oh, Well, So, you were testing... I would hardly say... Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like... Although, watch... Perhaps they're a bit like Shao Lantern. Have you ever thought Cloud Retainer taught us... There's no need. Menogias was the... When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying if you have the time. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. Gaming, You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh, I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea? Or would you prefer... No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shanhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not... Forget it. Has... Drunk guest. Are Auntie Xianyun and Shanhe serious right now? Oh dear.
while one was busy orchestrating this act. Recently, I've been conversing. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn. Dad, here, have some tea. Or no, wait, let's not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Gaming, I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to... Your aunts. Huh. Shh. Just think about it. Dad, but thank you. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. An interview? I suppose you could... The Fontaine? Then I'll... Of course, of course! Please follow me. Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly! Think of
as an investment, as Ningguang would say. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in... Oh, okay. Business related... We can talk about such matters at a later date. Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Got it! Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attack... Welcome back. Thanks to you. Oh, you should... And are you here to buy a kite? Please. Oh, we already have... Yes. Here you go. It doesn't feel right. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right, then. Phew, it's done. Let's get down to business. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Chi-Chi, we're almost there! Okay. Come here. Allow me. The lantern rite is as festive as ever! Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What's that?
taken that many pictures already? I need to load more film. Wait, the wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite! Gaming's performance was so cool, Paimon almost wanted to join in! Let's go find him! Oh! He's over there! Talking to his dad! Got a bunch of interesting gadgets. All from my time with the Crux. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need. Master is waiting for me right over there. Son. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. And much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer.
When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. That's quite the smile you've got there, Gaming. It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and think if everyone has time, go fly a kite. If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. More refreshing than a strong cup of tea in the afternoon. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? So, did you have some, or did you just come to see me? Ooh, a smooth talker. Not what I was expecting. So, Miss Librarian, got any books to recommend? Recommended book. What's with— Oh, I think it would be quite helpful for you as traveling. Ooh, do you think— Isn't this— Oh dear. Come to think of it, quite a few of our books are on— Whoa, is Paimon imagining things, or does the Such a pain. If you'd rather get— Lisa seems really scary. You really are such a considerate cutie.
Let's see. First, we can go to the souvenir shop. It's called With Wind Comes Glory. So let's meet there shortly. Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Hello, Marjorie. Annie, why so surprised? Today is such a... So it is. In that case, I declare this the day of my life. I wish I could get back. Don't you think... Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. Or you could let your new friend pick something up. Yes! Yes! Let us pick! Take a look. This pair? Soft, puffy, and very comfortable. Certain to make a little girl, well, in this case, after all. Bloomers? I'm sure to attract some strange looks if I dress up like a small child in public. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Well, if you insist, I'll just use them as an extra pair of pajamas. Goodness, is that the time? Oh, so you're a fan of the gallant Lady Vanessa too? For example. Hmm. Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue, even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put two and two together as soon as I saw you here. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be, Lisa. Let's go and find the next overdue book. It's been getting quite busy recently. Welcome to Good Hunter. Table for two? 3! Oh, my apologies. Please sit wherever you like, and call me over once you're ready to order. So we're gonna eat first and bring up the book situation later? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? Work is that bad, huh? Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what you're... Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are.
Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Why don't you order us some... What? Good hunter's signature dish. If it's what you want. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Finished ordering? Sit here. It's been getting quite busy recently. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Beautifully tender and cooked to perfection. No wonder it's their signature dish. It's a shame I can't have more, but Time is getting on. I suppose I should care. Let's have a little... Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the boar princess. The boar brisket? She means the book. Oh, I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. This is our final call. Welcome. Couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for you. Yes. Now, which book was it that has the line, "A date without flowers is a date without romance"? Take the hint. Never mind. Your ignorance is somehow rather adorable. Since you're here and Lisa is here and this is a flower shop, you might as well get a bunch of flowers, right? It only makes sense. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Dandelions are one of our classics, and a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. Come to think of it, Miss Flora herself gives... You sure? Can't change again once you've made your mind up. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Mist flowers? Over there in the corner. But don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? It's just that Lisa seems to use Electro quite a lot. Things could get a little bit dangerous. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Some flowers for Miss Lisa? You want my help? I don't know if I have the best taste in flowers. I couldn't help but notice the flower on Miss Lisa's hat, though. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? These roses were bought from a traveling merchant a few days ago. Miss Flora thought maybe someone would like them. You sure? Can't change again once you've made your mind up. I can see you put a lot of thought into this. Have you ever heard of the Witch of Purple Rose before? I thought that after returning to Mondstadt, I wouldn't have the chance to see fresh roses again. This seems like a good sign. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. Once again, we see a total lack of respect for literature. The Pale Princess and the Six Pygmies. Ring a bell? Oh, yes. Well, what happened was... oh no, what am I gonna do? I lost the book. A while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library, but I couldn't find it anywhere.
I looked for days, but nothing. It's like... Uh-oh. That Lisa does some... I heard... Well, if it really... The blame lies, and their punishment will be 3. No, 10 times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy! Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie, I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Oh! Use your elemental sight to look for clues! Gosh, all I can think about is Diluc. Together after all. Mondstadt welcomes you. Fresh fruit, only at Quinn's Fruit. Pie. That's what I'll make tonight. Better see Barbara at the cathedral if you're injured. Give me a better price. Looking at the elemental traces, it's... So Donaton It's not from the restrict... Whoever wanted... The elemental... You must see... Let's follow... Finding someone to chat to would be better than just... No one escapes my sight! That's more like it! The elemental traces are strong here, but it seems our thief did not stay for long. The trail keeps going. Let's keep looking.
It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frightened the turtle back inside his shell. Dodge this! It must be nearby. Using elemental sight, you can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book. The thief lives inside ruins? Please do not jump to such a preposterous This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. It's not unlike them, in the sense that they are known for darting around amongst underground ruins. But adventurers do this also. A seal? Not to... Why is... Come on. Whoa! So this is what... It's so much bigger in here than Paimon thought! Do we really have to go all the way inside? If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions.
Come a little closer. You're in for a little shock. You've been... You're in for a little shock. Come a little closer. You've been a naughty boy. Hup, hup, hup. Get here. This moment will be frozen in time. Freeze! Dodge this! Cool it! Wipe out! Go! As a dutiful maid would. Leave it all to me. Steady as stone. Time to clean up. Hey, get him! No escape! Oh, so sorry. Dodge this! Cool it! Freeze!
I must leave no stone unturned. Cool it! Don't get frostbite! Dodge this! Freeze! Try not to enjoy this too much. Bombs away! Hey, look! It's an abyss mage! Lisa was spot on! Steady as stone. Someone needs assistance. How did you find this place? It's so well hidden! I have no interest. Tell me. You have no risk. I was unaware that an old... The library return. I am after, huh? Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. We'll just need to find the book. It's the Pale Princess and the Six Pygmies! That's the one. Otherwise... Then again, and it doesn't... Yeah, it seems like just an average story. Since this book has piqued your interest, there's no time. This is an exclusive... Exclusive print? Excuse me. Are you in some way dissatisfied with my work? Good. You're my work here. Don't forget to register.
you've returned. Thank you, Miss but Paimon thinks we're forgetting some. Look, over there on the shelf. And look how many. Oh. Take one. With you. I hadn't as come. Wow. In fact, they were intended. Lord Barbados, please see to it that Godwin gets home soon and safe. Ad Astra Visas. When you're high up, everyone can hear your voice. Take your pick. You'll find no second raters at what.